Hello, 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 chat. We are live. We are absolutely live for, well, the critical game. It is India versus France, quarterfinals part 2. Part 1, India won convincingly with a score of 3-1. Now, 3-1 is enough, but at the end, it doesn't matter by the margin you win. All that matters is do you win or lose. So even if France were to defeat India 2.5, 1.5, we would go into the tie breaks. And the France team has NVL in the tie breaks with Blitz, who's a Blitz expert. So I would rather not play Blitz against MVL. So all we need is a win or a draw, and the games have begun. So let's go one by one. Also, by the way, Legacy Arjun will be playing the Speed Chess Championship against Caruana, so we'll keep an eye on that. I have put up the results there. They will automatically update and we'll get to know what the result is. So let's go, chat. Game 1, Vidit has the white pieces. Japan won. That is crazy. Yo, chat, kya haal hai? Some guy somewhere, Pawar and Shitesh, kaise ho bhai? D4 played by Vidit, knight f6, knight f3 played. I presume he will not go for the London buy, of course. He will go c4 and then either knight c3 or g3. Let's see what happens. India won. Oh, he goes, wow. He goes g6 and b3. Very interesting choice. Not something I expected from Vidit, but okay. यो तने भाई क्या हाल है? यो पिछाड़ो कैसे बढ़िया भाई. यो स्पेन का मैच है. ओ अच्छा भाई, अभी तो बहुत कुछ है स्ट्रीम पे डालने के लिए. स्पेन का मैच बाद में देखेंगे भाई. अब लेट्स गो भाई. Okay, come on, VD thinking. Let's go to the Nihal Sarin game. So Nihal Sarin game is, Nihal has the black pieces. Nihal has like all the draws and one loss so far. So I'm hoping he can strike back. He might strike in a critical juncture, just like MS Dhoni. Then you have SL with the white pieces, who's had an amazing tournament. I hope he continues like he has so far. Then you have Sasikiran as well. Very good choice by Team India to stick to the same team. And we have Sasikiran with the black pieces now. This time, this is his first black piece in this tournament. So I hope he can justify it and at least hold a draw. That's all that's required. Let's go to the Caruana game. Start nahi hui hai, so that is one thing. Let's go to the game, chat. Yo, chat, क्या चल रहा है भाई? What's going on? What's going on, chat? क्या लग रहा है भाई? क्या होगा? Yo, Mr. AR is Anisha, yeah? I assume photo से मैंने पहचान लिया. Karuna is starting, yeah, I know, but I think अभी के लिए ये मैच ज़्यादा important है. I think it's very obvious this is more important. We'll also have an idea, we'll keep an eye कि क्या score है. Bullet वाला phase को ज़्यादा focus करेंगे at the end, because bullet में ही decide होना है कि अर्जुन और करुणा में कौन जीतेगा. No one will take such a huge lead कि they will win in the blitz itself. So we'll focus on that at the end part, but for now let's focus on this. 600 लोग कहाँ गए? अभी तो start करिए stream भाई. अभी तो गर्माहट फैलेगी. Knight f3, g6, b6. b3, bishop g7, bishop b2 played, and I think Vidit will slowly play c4. We might have a transposition to the Reti system here. I think it is very, very likely. हाँ, Vidit hands वाली opening है, वहाँ पे bishop a3 था, and VD had played e6 and d5. So this is a quite different. I think Reti में transpose होगा ये. सागर स्लीपिंग मतलब. यो आहान भाई क्या हाल है? टिकवा स्ट्रीम के बीच में बाल काट के आ गए. नहीं भाई, बाल पहले ही काटे हुए थे. पहले काट के आया था पिछली स्ट्रीम में ही. आई विल टॉल माय चैनल पॉइंट्स ऑन लेगेसी. ही बेटर विन. लेट्स होप सो मैन. ऐसा होना चाहिए कि एससीसी में सारे इंडियन जीत जाए. अर्जुन, निहाल, प्राग, व्हाटएवर, हुएवर इज प्लेइंग, एंड देन दे कैन ऑल मीट एट द टॉप एंड हैव अ ऑल इंडियन फिनाले, सेमीफाइनल एंड फाइनल्स. या दैट विल बी ऑसम. चलो भाई, चैट स्ट्रीम लाइक कर देना भाई. लेट्स गो. एंड इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब, लेट्स गो. Come on. And कितना प्रेशर होगा ना फ्रांस पे भी. They have to win on demand. ड्रॉ भी नहीं चलेगा. सो क्लियरली व्हाइट पीसेस वालों को इंस्ट्रक्शंस होंगे कि भाई जीतना है. व्हाइट में कौन कौन खेल रहा है? जूल्स मुस्ताड है, प्रेशर है भाई टू डिफीट द एवर स्ट्रॉन्ग निहाल, एंड देन ऑल्सो ऑन टिग्रान घरमिया टू पुट प्रेशर ऑन शशिकरण. बहुत प्रेशर होगा दोनों पे. जस्ट गॉट स्मैक्ड इन द फेस बाय अ ट्री. Yeah, don't you hate it when a tree just shows up at your door and just smacks you in the face like this? Yeah, it's just ridiculous. Yeah, मतलब go green करते जा रहे हैं और trees का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं यार. No, that won't be awesome. What I'm saying is, they have all the pressure on them. Yo, Rishit bhai, what's up? Yo, Arka bhai, क्या हाल है? Yo, Mehul bhai. I wish YouTube had channel points. And यहाँ पे भाई MVL एक deep सोच में जा चुके हैं. Now this is clearly prep to counter MVL's Grinfield defense, I think. And E3 played after a very short thought, 1 second thought. And VD is again trying to put pressure on the clock. I think this has been a consistent strategy. We saw it since yesterday. कि सारे players कोशिश कर रहे हैं time पे edge लेने की. We've seen this consistently and I hope it maintains that way. यहाँ पे Nihal is falling behind a little bit. And I think Nihal में बहुत pressure होगा यार. I think it's like he's one guy who should play much better. Yeah, I think he's not having his best form. Yes, I was walking and it was in my head. Exactly. Yeah, इतनी हिम्मत पेड़ों की है.
ऐसे रूल्स घुसा के बैठ जाते कहीं पे, भाई अपनी प्रॉपर्टी है जैसे, बताओ कुछ देते भी नहीं हमें साथ में. SL game, yeah, SL game is still in the opening phase. He's played A4, A5, and yeah, now he'll play, I think, H3. He'll play Rook E1. He'll play, I assume, C3 B4 or C3 B4 is the plan. जापान ने पेल दिया जर्मनी को. आई नो भाई, दैट इज सरप्राइजिंग. कितने अपसेट हो रहे हैं रे. दिस वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, रिमाइंड्स मी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन चेस इन इंडिया. सारे लोग अंडररेटेड हैं because of the pandemic. They worked really hard and nobody knew. This is totally reminding me of like the chess situation in India. Yeah, इतनी हिम्मत पेड़ों की. Exactly. Why France 0-0 India? Because this is round 2. If India wins this or draws this, then India goes to the semifinals. And if France wins, then we have a 3+1 tie break. So that will be crazy. Nature like महा मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है. Exactly भाई. So going to the Vidit game again, the most critical one after E3, B6 played by black. So E4 is an important square here after C4, Bishop B7. आपको लगता है कि निहाल गेम क्वालिटी बहुत फ्लक्चुएट होता है. आई थिंक निहाल हैज नॉट बीन एबल टू अडैप्ट टू दिस टाइम फॉर्मेट. दैट माइट बी द रीजन. दिस इज अ वेरी यूनिक टाइम कंट्रोल, 45+10. इट्स नॉट क्लासिकल, इट्स नॉट रैपिड. सो मे बी दैट इज द रीजन निहाल इज नॉट एबल टू प्ले हिज बेस्ट चेस. And but he's not playing bad chess. Like it's very similar to like having a lot of draws, only one loss he had. So he is being consistent, but we need that victory from him at some point. Hopefully it comes at an important moment. Let's see. टाइम में पूरी टीम खेलेगी वो देखना पड़ेगा. आई विल लेट यू नो इफ द होल टीम विल प्ले और नॉट. वो हम देखेंगे. आई एम रियली होपिंग उस तक नौबत ना आए. यू नो, मैनिफेस्ट करने वाली बात होती है. मैंने वो अब तक रेगुलेशंस देखा ही नहीं कि उसकी जरूरत ही ना पड़े. बट आई थिंक आई शुड चेक नाउ. इट्स टाइम टू चेक. Okay. In case of a drawn duel, each team wins one of the two matches or both matches are drawn. Board points shall not be used as tie break. The tie will be broken as follows. After a draw of colors, a blitz match will be played with the time control of 3+2 starting from move 1. If the blitz match is drawn, another blitz match will be played starting from move 1. The colors shall be reversed. And if the second blitz match is also drawn, then they will keep doing the same, yeah, until we have a winner. वाह, पूरी रात बैठे रहेंगे भाई. I think चारों खेलने वाले हैं. I think पूरी टीम खेलने वाली है. It's not just one guy. The entire team will play. I think the entire team will play. लास्ट वर्ल्ड कप में भी जापान ने जर्मनी को 2-0 से पिला था. इंटरेस्टिंग भाई. अभी जर्मनी की ज्यादा बेइज्जती मत करो यार. मेरा कल जर्मनी वाले का इंटरव्यू है भाई. कोई देख रहा होगा स्ट्रीम में, कहेगा बड़ी बेइज्जती है भाई, हमारे देश की बेइज्जती हो रही है यहाँ पे. अर्जुन ने आज फैबी को फाड़ दिया. तो भाई आई होप अर्जुन विंस. आई एम रियली होपिंग दैट हैपेंस. बहुत जरूरी है यार. Yeah, exactly. By the way, after B6, C4 played, Bishop B7, Knight C3 played, and I assumed C5. Yeah, you know, you want to break in the center somehow. So either E6, D5 or C5 is important. Going to the Nihan sitting, क्या चल रहा है? Okay, after the move, yeah, we saw it till this. Castles H3, Bishop B7, D3, D5 takes, Knight to D2, Queen D7, and yeah, A4 played now. I think Black can also go Knight F4, trying to put some pressure on the king side. Going to the SL game, क्या चल रहा है? Okay, SL के कैसल के बाद बिशप A7 और कुछ हुआ नहीं है. SL is taking his time here, but Danny Rick back to Red Bull. So आज के लिए I forgive nature. Interesting. जैसे में लिखा है पूरी टीम खेलेगी. हाँ, पूरी टीम खेलेगी. I just saw as well. पूरी टीम खेलेगी. आई थिंक एक बंदे का वैसे भी लक कह रहे हैं. वी डो नॉट वांट लक. आई थिंक पहले बोर्ड पे MVL वर्सेस अगर वीडियो आ जाएगा MVL के वाइट पीसेस, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. गोइंग टू द गेम ऑफ Sasikiran अगेन. नाउ आफ्टर नाइट C3, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसे स्ट्रक्चर्स में ना ड्रॉ करना ब्लैक के लिए काफी आसान रहता है कई बार. सो आई एम होपिंग Sasikiran विल होल्ड दिस गेम. Bishop P3 played, just take it, and I think it should be all fine. Then you can play F6 as well. And this is one of those rare occasions जहाँ पे F6 खेलना is not a big deal, because basically you have control over D5, and just one piece coming to F5 can always be captured in case of any emergency. And you also don't have a bad bishop, so it's all fine for black. So seems to be pretty equal. Let's go to video game. Yeah, he played D5 directly. Interesting. भाई कान पड़ गया यार. ये क्या हुआ? अच्छा, कारो ने गेम स्टार्ट हो गई क्या? भाई इतना फास्ट मत करो यार, धीरे धीरे चलो भाई, कान मत फाड़ो. सबसे सुंदर चेस पीस कौन सा है? सुंदर तो यार पता नहीं यार. सुंदर तो बिशप लग रहा है भाई. एलिगेंट है यार. ऐसे मुंह खुला हुआ है उसका. खाना दो मुझे. भूखा है तो आई वुड से कि प्रॉब्ली बिशप. आफ्टर चेस झील शाह माइट डूइंग इंजीनियरिंग. अरे भाई वो भी अपनी अपनी मर्जी इंजीनियरिंग करे भाई. वैसे भी उसको नया इंजन बनाने की जरूरत है, पुराना वाला पड़ गया. नाइट लुक्स क्यूट बट टेढ़ा चलता है. अरे इट मूव्स लाइक ऐसे, लाइक गेस नहीं कर सकते भाई. तुम कहोगे अभी आया और वहां चला जाएगा वो.
ओके निहाल स्टेप अप मेट निहाल का मुझे पता नहीं भाई. आई जस्ट होप निहाल समहाउ विंस दिस बिकॉज बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए टू विन वन गेम. गोइंग टू द गेम ऑफ विदित अगेन. रुक C1 played by VD and now I think black will probably counter with C5. I think it's time to for black to counter because white is not developed, like he's not castled, bishop भी developed नहीं है, so white cannot really open the center with any sort of advantage here. But I would say black makes a mistake, but I think he'll probably find C5. MVL बहुत strong है भाई. MVL is very strong. झीलचा कौन है? जिसको डाउट है झीलचा कौन है भाई, सेकंड चैनल का चेक करें. हाउ आई कॉट अ चेस टिल्टर वीडियो, समझ आ जाएगा कौन है. लास्ट गेम रिजल्ट्स क्या रहा? लास्ट गेम रिजल्ट्स में बेसिकली इंडिया 1-3-1. सो ऑल इंडिया नीड्स टू डू इज आइदर विन दिस मैच किसी भी रिजल्ट से, या इवन 2-2 टाई वुड ऑल्सो विन इंडिया द मैच. अगर फ्रांस 2.5 1.5 भी जीत गई, देन we will have a tie break जहां पे we'll have blitz of 3+1 all four boards. नहीं, 2.5 1.5 is good enough victory. India won the first round. India won the first round. Draw या win चाहिए. And to be honest, कभी भी draw की strategy से खेलना ही नहीं चाहिए. When you play for a draw, right, you basically are preparing yourself for a two-way result. Either you lose or draw, and mostly you will not end up drawing. So you should always play for a win and then hope for the best. Anyways, black को इनकी टीम को पता है कि we cannot draw, right? MVL की टीम को पता है कि if they draw all games, they will lose. So they will not accept the draw. They will go for some crazy stuff. And if you're going for a draw desperately, you might not play the best moves. E6 played now. Okay, you can also take on D5 because if he takes with the pawn, then the bishop is blocked. So that might be one strategy. Or you might just develop. Yeah, also possible. Unfair तो है अल्फा मेरा की, ये बात है, but rules ऐसे ही हैं. अगर इंडिया के अभी मान लो 2.5 1.5 जीते होते, बाद में फ्रांस 3-1 जीता, so we would probably not complain. So yeah, it's kind of unfair, but क्या कर सकते हैं भाई. I know we'll also have a look at Fabi against Arjun, वो भी देखेंगे. But I think starting part में we'll focus more on this because ये 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, वो 3 घंटा चलना है भाई. So that we'll see later. I think अभी इसमें बुलेट सेक्शन में मजा आएगा देखने में. फिलहाल इस पे रहते हैं. Knight is the poster boy of chess. True. What all revenue sources you have? कोई revenue source नहीं है भाई. Have you sacrificed queen in any tournament? Yes, multiple times. It's a lot of fun भाई. When you win with the queen sacrifice, it gives you an ultimate high. It's like, oh wow, queen दे दी भाई, पेल दिया. Anyways, he takes on d5. Now he'll probably take back with the pawn. I think knight से मारेगा actually. Knight से मारेगा, not with the pawn. Depends. आज long stream होगी. Let's see. Depending on situation. Nihal losing. I wouldn't say he's losing. Let's see what happened after the move a4. He played f6, logical move. A c3 के बाद king to h8, and here a takes, rook takes, and this is not losing at all. Only the thing is कि ये b5 pawn is a bit weak, and it might cause a few problems. The knight is coming to e4, and you might occupy this square sometimes. But at the end, it's fine. It's pretty symmetrical. Not symmetrical, but I would say it's kind of solid for black as well. Should not be a big deal at all. Should be holdable. Going to the game of SL again. SL has played the move rook to e1, and this game is going very, very slowly. That's very interesting. Yeah, they are not moving it fast at all. I think Laurent Fressinet also realizes that SL is in great form and he wants to counter him. But for now, let's see. Going to Sasikaran's game. Sasikaran, I think, is having a decent... I like his position. Like, I think with the black pieces, the draw is fine. And for that, I think this is a great position. You basically control d4, f4, both pawn breaks for white. Put the knight on e6 maybe. And then it's very difficult to imagine white winning this. Very, very difficult. But okay, let's see. I mean, if you remove all the pieces, the pawn endgame might even be winning for white because the double pawns for black. So you never know. Going to VD's game now. Okay, after cd5, ed5 was played. He went a first choice. And now bishop d3. So now VD is playing castling. I think castle will be the next move. And then black will probably play c6, rook e8. Queen e7, rook c8, and then slowly prepare for c5. What's the beef between Fressinet and Giri? There's a beef? Really? I have no clue about this. Unfair क्या है? मैच 100 रन से जीता, 1 रन से सीरीज तो डिसाइडर नंबर ऑफ विन से ही होती है. ये बात तो है यार, ये बात तो सही है. Okay, so all looks chill chat. ये टाइम अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत जल्दी कम हो जाएगा. If India can win in the rapid section itself, जो भी ये pseudo rapid है, that will be awesome. Otherwise तो भाई फिर 3+1 में risk करने का. Would you like to see 3+1 and like win there, or would you like to see a clean win? What do you think, chat? Emoji मैं ऐड नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला मुझे, मैं कर लूंगा. Lawrence the commentator, right? Fressinet Laurent is playing. I don't know if he commentates. Yeah, he commentates for chess.com sometimes. Yes. Clean win, yeah? Clean is better, exactly. Clean is always better. Dirty is only better in the bedroom. Otherwise, clean is always better, I think.
So I think it should be better, yeah. And let's see what happens. I think we should castle, yeah, not wasting time here. Thank you, SG bhai. Winning Blitz 3+1 उसने मजा आएगा. मजा तो आएगा भाई. देखो, I agree. It's a lot of fun to, skydive, and then it's a lot of fun to, let's say, climb a mountain. But what do you do when the parachute doesn't open? I think then it's not fun. So it's better to have a clean win. I think that's much better. Blitz में हार के मजा आएगा यार. Blitz में हारने के बड़ा मुश्किल है यार. It's very difficult to defeat Envil in Blitz. He's very strong at Blitz. He has been the world Blitz champion as well, so it would not be easy. I think VD के लिए बड़ा difficult रहेगा Blitz में जीतना. And there'll only be one match. So if you lose that match, it's over. There's no second match then. अर्जुन missed win. भाई वो अभी Blitz है. उसमें बहुत missed wins होंगी यार. बहुत missed wins होंगी. पहला मैच ड्रॉ हुआ उनका चैट. They have drawn the first game. I think result दिख रहा है ना? Result दिख रहा है. हाँ, बढ़िया, बढ़िया. फिर से अगेंस्ट फ्रांस. हाँ भाई, it's a 2-match game. It's not over. The quarterfinal is still going on. It's difficult to cover Blitz games. Cover करने का चक्कर नहीं है भाई. Cover करने का कोई stress नहीं है. I'm just worried about the results भाई. I want to have a clean win. क्या चेसी क्वीन चीट करती है? नहीं भाई, नहीं करती. Going to the game here. Nihal is taking his time, yeah? We're kind of interested in this position. I don't know why he's taking so much time. I think rook a8 is kind of pretty obvious. The rook on f8 is anyway not doing much. And you kind of control the a file. I'm not sure what he's thinking. आज सेटअप क्लीन है भाई. थैंक्स लॉट यार. टाई ब्रेक कैसा है? लकी ड्रॉ होगा एक बोर्ड का. लकी ड्रॉ नहीं भाई, चारों खेलेंगे. लवी का मुझे क्या फनी है. दो लोग नॉर्मल चेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तीसरा क्वेश्चन लेगा, व्हाट इज द राइट एज टू लूज. ये हर जगह होता है रे. ओके. चैट मुझे समझ नहीं आ रहा यार. Imagine करो from MVL's point of view. MVL's rating is now 2736. He's lost a lot of rating, right? I don't think he's in his peak anymore. Like, जहां तक मुझे दिख रहा है, MVL has gone down a lot. Like a lot. He was like 2775, 2785 वाला player था वो यार. Like, he's gone down quite a lot. So maybe like we do actually have a chance of winning this cleanly, yeah? Fabi Arjun, I would say I am expecting Arjun to win. I don't think Fabi is as strong, like unbeatable in online chess. And Arjun is very strong, has a lot of experience also now with CCT. So I'm expecting Arjun to win. Yeah, he lost a lot of points. We'll gain a lot. I think he'll gain like around probably T20, K20 होता है Blitz Rapid का. So he'll gain a lot of points in Rapid. I think around at least 12 points, yeah? Oh, 5. उनका तो हाँ 12 होगा हाँ. Blitz will be like the queen sacrifice of feeling. But VD अपनी जगह है. Can I explain? I thought there are only 4 matches. What is this Fabi Arjun about? Fabi Arjun is basically the separate championship, the speed chess championship. It's not linked to this tournament, but it also started today. So we'll keep an eye on that tournament as well. Arjun Fabi चल रहा है भाई. We're having a look at that game also. But by the way, Arjun won the second game. Wow. So ये क्या हुआ भाई? 15 moves में lost. What? Did he mouse slip? Knight a3, bishop a3. What? अच्छा, यहाँ knight e2 was the move. Bishop a3 was a blunder. And now cd4, bishop d6 and knight e4 and Fabi resigned. Wow. So Arjun is leading. That is crazy, man. That is crazy. Third game start ho chuki hai. That is crazy. Okay. But we'll focus on this match for now. Acha, I was confused. Score prediction. I would say it would be like 20. It will be probably like Arjun will win by the lead of 3 points. 3 points की रीति जीतेगा. हर जगह नहीं भाई, आपके चैनल पे 10 लोग के बारे में पूछ रहे हैं और एक चेस क्वेश्चन. अच्छा. एनीवेज यार, बाद में वर्जिनिटी का तो करेंगे. फिलहाल चेस में करते हैं. नाइट डी संख्या कैसल्स के बाद आई थिंक यहाँ पे h3 खेलने की उतनी जरूरत नहीं है बिकॉज द बिशप इज नॉट कमिंग टू g4. एंड नाउ आई थिंक VD's प्लान इज नॉट सो क्लियर. आई थिंक बिकॉज यू कांट रियली पुश e4. You don't have anything here. I think कोई clear plan नहीं है. So I assume first of all we to connect the rooks and also maybe knight e2 and maybe rerouting this knight to f4, putting the bishop back to e2 or b1 and then knight to d3 and knight to e5. Maybe that's a possible plan. You could also play like queen e2, rook c2, rook c1, double up rooks on the c file also possible, or queen into rook d1, putting the many plans, but there's no clear cut plan which will give him an advantage. So it will be a very slow game. And time will again play a factor, I think. It will be important kiske sath time at the end.
पुल टूर्नामेंट नेम्स इन छोटू सा टेक्स्ट ऑफ द स्कोर्स, उससे न्यू लोगों के लिए इजी रहेगा. टूर्नामेंट स्कोर वो कोई चक्कर नहीं है भाई, सिंपल है यार. इंडिया हैज टू विन और ड्रॉ, एज सिंपल एज दैट, खत्म. कोई स्कोर वोर की जरूरत ही नहीं है भाई, वो दिख ही रहा है इंडिया क्या स्कोर है अभी. गोइंग टू द गेम ऑफ एसएल नाउ, हु हैज बीन द स्टार ऑफ दिस टूर्नामेंट, and after the move c6 he's thinking, I think he left it at castles, knight d2, knight g6 and d4 and c6 played, and yahan pe he can totally play like, you know, knight f1, and here he could play bishop f1 and move the bishop back and play knight c4 and so on. SL better, I wouldn't say he's better. I think wo इंजन पे उतना भरोसा नहीं रखना चाहिए. आई थिंक इट्स ओके, इट्स प्रॉब्ली जस्ट ओपनिंग फेज राइट नाउ, एंड अभी काफी कुछ चलना बाकी है इसमें. अभी हनीमून फेज है यार गेम का, अभी 2 महीने हुए हैं, तो अभी दे कांट रियली जज द रियल रिलेशनशिप. गोइंग टू द गेम ऑफ वीडी अगेन, a6 प्लेड एट वीडी थिंकिंग. नहीं सत्यम भाई, ऐसी स्ट्रीम नहीं करोगे, कर रहे हैं भाई, सेम टाइम पे मैच हो रहा है रे भाई, सेम टाइम पे मैच हो रहा है यार. इट्स लाइक भाई चेसकॉम इंडिया दोनों स्ट्रीम कर रहा है क्या अलग अलग? आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस नाउ, आर दे स्ट्रीमिंग बोथ? दे आर हैविंग 2 स्ट्रीम्स भाई साहब, भाई साहब दे हैविंग 2 स्ट्रीम्स या. ओके भाई साहब, हिम्मत. ओके एनीवेज, निहाल की देखो, निहाल का क्या देखना है रे. बाय द वे निहाल गेम पे चलते हैं अगर इतनी डिमांड है तो. या ही टुक विद द बिशप एक्चुअली. स्कोर डालने नहीं बोल रहा, स्कोर्स के ऊपर टूर्नामेंट नेम डालने को बोल रहा है जो स्कोर्स राइट में है. अच्छा टूर्नामेंट नेम, अरे वो चक्कर नहीं है, अरे एससीसी है, वो समझ जाएंगे लोग, समझ जाएंगे. मैं हूं ना बोलने के लिए यार, मेरा गला है ना भाई फटने के लिए, क्या चक्कर है. 2 स्ट्रीम विद 4 कमेंट, होली क्रैप भाई, भाई अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है. बिशप 8 प्लेड नाउ, लेट्स गो बिशप b7. वापस वही ना, आई डोंट नो व्हाई ही टुक विद द बिशप. आई थिंक रुक से मारना बेटर था यार. I think now knight e4 and then maybe knight g3, knight f5 maybe at some point, maybe d4 as well, and white can break in the center, and black के pieces थोड़े awkward तो है, मानना पड़ेगा. Going to the game of SL now, he plays bishop b3, very logical as well. We can come to c2 later on, and the knight can also come to c4 if required to. But I think यहाँ पे s3 खेलना बहुत important है, just in case black doesn't pin this and create a lot of pressure on d4. Clips उठा लेंगे पैसे, अरे of course मैं just joking यार. FIFA scores, FIFA, I don't give a crap about FIFA right now भाई. अभी हमें 2 मैच फॉलो करने हैं भाई. It's already a mess. Going to the game of Sasikiran. By the way, Sasikiran has played the move f5. I am not sure if that was required considering circumstances. This is where, you know, it's a very practical decision. After e takes, rook takes, you are basically giving yourself an isolated pawn, which I'm not really sure should have been like the best case. Now, yeah, knight g3 maybe controlling e4, and this might be a problem somehow. I'm not really sure about this, chat. I'm not really sure about this move. Maybe it was not required considering that we are already winning. All Sasi needs is a draw. I know I said कि win के लिए जाना चाहिए, but this is definitely a bit more risky than I would have preferred. Going to the game of, okay, SL has not played. Nihal की और game में knight e4 आ चुका है, so white is playing the best moves. Slowly he might play bishop c2, pointing it towards the king side as well, and then you might see the h pawn, the knights coming into the game, the queen coming into the game, and there might be some attack on h7 while the bishop is sitting on 8. Going to VD's game, after the move castles a6, b4 was played by Vidit to basically prevent c5 and a5 for that matter, and now rook e8 played, and now VD is thinking. क्विक समझना, जस्ट आया हूं तो भाई चैट फिलहाल चारों गेम चल रहे हैं. इंडिया को सिर्फ ड्रॉ या विन चाहिए. 1.5 घंटे में हमें पता होगा कि भाई व्हाट विल हैपन, विल इंडिया गो टू द सेमीफाइनल्स और नॉट. बाय चांस अगर मान लो इंडिया हार जाती है तो ब्लिट्स मैच का टाई ब्रेक होगा. नाउ आई वुड लव टू सी ब्लिट्स, बट व्हेन इट्स समबडी एल्सेस टीम वी वुड लव टू फिनिश इट क्लीन. या शशि भाई ने लास्ट विनिंग गेम ड्रॉ किया और ये गेम भी मजे में खेल रहे हैं. नहीं यार, आई थिंक लास्ट गेम इतना फर्क नहीं पड़ता है. जस्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल चॉइस, ही मस्ट हैव फेल्ट इट्स कंप्लीटली विनिंग. इट्स फाइन, कोई चक्कर नहीं है. आई थिंक एक गलती हो जाती है, बट इस बार थोड़ा सा सही खेलना पड़ेगा यार. वी नीड सम प्रैक्टिकल डिसीजंस एज वेल. अरे मैं कमेंट्री के पैसे की बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ और बात करता है. एनीवेज समझा नहीं. अर्जुन साहब इज आल्सो इंडियाज फ्रेंड्स. आई नो इंडिया का मैच है भाई. वहां पे अर्जुन इज लीडिंग राइट नाउ, एंड इस मैच में आई थिंक अर्जुन इज अगेन बेटर. सो आई थिंक अर्जुन इज क्रूजिंग अगेंस्ट फैबी इन दिस मोमेंट. लेट्स गो भाई. इतना जल्दी टाइम बीत गया, अभी तो 41 मिनट्स तेरे. ये राउंड फ्रांस टाई ब्रेक होगा. एग्जैक्टली टाई ब्रेक होगा.
All the best, Team India. Exactly, Anushka. Let's hope so. India wins and wins it clean. A4 played by VD. Now, I assume he wants to play B5 and basically create a weakness on C7. Taki kal ko he can double up, triple up pieces and he can just attack this. And yeah, Black should probably play C6 here and not allow VD to do this. But I hope he does. Let's see. You see Fabi intoning Arjun in the recent podcast. नहीं यार क्या बोला रे उसने? Did Fabi say something to ऐसे scare Arjun? क्या बोला उसने? What did he say? पिछले मैच से तो आधा पॉइंट ले सकते हैं पिछले मैच से आधा पॉइंट नहीं यार, इट्स नॉट ऐसे काम नहीं होता रे कि आधा पॉइंट ले सकते हैं. मॉड वॉर्ड हाथ का मैल है रे. मॉड वही, मतलब मॉड की मोह माया मत रखो. जो मॉड बनना नहीं चाहता वही मॉड बनेगा रे. यही भगवान की मोह माया है. फैबी कल भी टीटी में भी ब्लंडर कर दिया था. हाँ भाई, ही केम 66th yesterday in the rankings. He said Arjun is a more complete player. तो अच्छी बात है ना भाई. तो that's praise, no? He said Arjun has been performing badly in CCT, which is good for him, and he feels he has a clear edge. To be honest, Anish also said the same against Nihal, and he lost. So I don't think Indian youngsters in general don't really get scared or intimidated by any other top player. They are not scared at all. They're playing against Carlson so many times, it doesn't matter. Looking sharp with the haircut. Thanks a lot, buddy. वाह भाई, क्या बोला है? मेरा नाम हमेशा याद रखना. वैसे बिल्कुल भाई, तो फॉलो कर रहा हूँ. फ्री मॉर्निंग लॉयल फैन. थैंक्स लॉट यार भाई. हाँ, मुझे मॉड नहीं बनना. अब कहोगे तूने खुद ही मना कर दिया. मैंने से कुछ नहीं बोला भाई, लेकिन जिसको बनना ही नहीं कभी वो नाम ही नहीं लाएगा ना उसका. ही विल नेवर मेंशन इट. चैट स्ट्रीम लाइक कर देना. लेट्स गो. 70% लोग कह रहे हैं वीडी विल विन. लेट्स सी भाई क्या होता है. Does score matter? No, score doesn't matter. Even if France wins 2.5, they basically tie and we'll have the tie break. I don't want tie breaks. I want a clean win. Simple as that. And MVL is taking his time. He knows it's a critical game because MVL is the former world top 10 player, right? So uske upar bahut pressure hai. He is the one who's supposed to take France home. And from our perspective, of course, he's the guy you have to stop, right? So I think Vidi's game is very important. And also Sasikaran's game. I think at the end, it's fourth board we struggled a lot on. So let's see what happens. Knight g3 played, rook f7. I did not like this move f5 by Sasi, but let's see. Maybe he holds. Yeah, maybe he holds. Now knight e4 looks very strong for white. This is जो तुम्हें व्हाइट में दिख रही है चेस 24 की वैल्यूएशन में, दैट इज रैपिड रेटिंग. जो तुम्हें बोर्ड की काले में दिख रही है, दैट इज क्लासिकल रेटिंग. फ्रांस होम और सेमीज भाई अभी कुछ पता नहीं है. वी हैव टू विन और ड्रॉ दिस. Why Aliyah is not playing? It's not clear why he doesn't play for France. I think उतना passionately feel नहीं करता. We are slightly worse in all games. Looks like board 4 पे we are slightly worse. Board 3 पे I wouldn't say we are worse, but yeah, the bar says slightly worse. I wouldn't say it's worse. I think it's equal. Board 2 पे we are slightly worse, yes. And board 1 पे probably worse is too harsh. I think we are equal on 2 boards and slightly worse on 2 boards, yes. Indian on कौन है रैपिड में? I think विशी सर ही होंगे रैपिड में यार. He's always first. फर्स्ट इंडिया वन 3-1 एंड अब सिर्फ टाई भी करना है, जीतना है इंडिया को. फिर क्लासिकल रैपिड टूर्नामेंट है या रैपिड? दिस इज रैपिड. इमेजिन करो एनी टूर्नामेंट विच हैज अ सिंगल प्लेयर with a rating of more than 2200, the time control for a classical match cannot be less than 90 minutes each at least. So kahin pe bhi time 90 minutes se kam hoga na, it will always be rapid. It's Arjun rapid number 1. Really? That's crazy, man. Blitz mein to I think Arjun is already strong. Rapid mein bhi hai, that's crazy. What is knockout bracket? Bhai filhal ke liye I think India just has to win. And after India wins, तब देखेंगे भाई. I think then we can stress about it. फिलहाल के लिए let's just try to win this match. ये टीम चेंज की क्या? इंडिया ने टीम चेंज नहीं करी है. सेम 4 players. VD against MVL, Nihal against Musard, SL against Fesine, and then Sasikaran against Tigran. Good team. By the way, C5 horrible move. I think MVL is trying to go for a win and that's why he played C5. But objectively, this move should give Black an isolated pawn. Exactly the point of VD's move B4. Exactly. So I think this should be great for VD. He can just take it and take everything, even take this one. And this will be very difficult. I can't imagine VD losing this. I mean, I can imagine, but now 92, knight coming to D4. The bishop is a strong piece and we have proper control over D4. That means this bishop can never be activated. Yeah, not a good move at all. And I think VD gains a slight edge or at least comfortable equality with this. And at least practically, this game is better for VD now. Going to Nihal's game, what's happening? Nihal is taking a lot of time. Look at the clock on Nihal.
25 minutes Nihal has right now. And if I was, the team captain, I would be a bit worried because 15 minutes is a lot of time, especially for just 16 moves. And I think Nihal is definitely not comfortable with the position. And he plays the move b4. And what he's hoping for is that white just somehow gives the d4 square, but the issue is even after c4 the knight has no good squares. I would love to play to f4 but then come to e6, but I think white will just take, and suddenly white has a huge center. And if I could control d4 somehow, if I had one more move, I could play rook d8 and control d4, I'll be absolutely fine. But just d4 right now and white gains the edge. So Nihal under huge pressure, I would say. And he has to come up with some excellent moves now, which is not going to be easy with very less time on the clock. And it's still, I would say, the starting of the middle game. So going to the game of SL again. Black plays 95, the best move, and SL के ऊपर थोड़ा pressure तो है. For the first time, he's not better out of the opening, and will be interesting to see how it goes. Going to Sasikiran. Sasikiran has a slightly worse position as well. I don't like this for black at all. It's holdable, but Sasi, just like VD cannot lose this most likely, same way Sasi cannot win this. So I think board 1 and 4 cancel out each other. Then you have SL who has an equal game and Nihal who has a slightly worse game. So at this moment, France is on top. They are geared for a 1.5 victory, but it's too early to say. It's only the opening phase, yeah. विडी ड्रॉ तो कर ही लेगा, उसकी चिंता नहीं है भाई. ड्रॉ नहीं यार, विन करना है, बिकॉज वी माइट लूज अ गेम इन दिस राउंड चैट बिकॉज ऑल द 4 फ्रांस प्लेयर्स विल वांट टू विन, विल वांट टू बी द हीरो फॉर देयर टीम. सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि एक प्लेयर हमारा हार सकता है. सो एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू विन. आई डोंट थिंक we'll have 4 draws. It is very unlikely we'll have 4 draws, and that means either we'll win like 3-1 again, or we might lose one game and we need one win to cover up that. Fabi Arjun chal raha hai, we'll keep an eye. Filhal the score is 2-1 in favor of Arjun, as you can see. 4th game is going on and we'll keep an update on that. But I think main match abhi ye hai, and this will finish early so we can update that game later. Ha Vinay bhai. Video nikalega win. Let's hope so bhai, let's hope so. Sasi draw. Queen d2 played. I don't think so, man. I think this is very difficult practically. Because the thing is, इस पे बहुत pressure है. This pawn, if this pawn was here or here, I would say Sasi is absolutely fine. But this pawn being here with no pawn to support it, I can imagine rook e1, then knight e4, and slowly black-white exchanges a few pieces. Then in the end game, he doubles, triples, puts everything on e5, and हम constantly defend करते रह जाएंगे यार. That's the main issue. It's holdable but difficult. Going to the game of VD again. By the way, he's taken on c5. Good move LD, very normal. Black will take back, of course, and then VD will take as well. Has Fabi's standard reduced? I think Fabi has not gotten weaker. I think youngsters have become stronger, and that means it's much more likely that Fabi loses the game to somebody who's much lower rated. I want to study, but I'm so tense about this. कह रहे हैं Triple K. भाई Triple H would be proud of you, man. I think tense तो होना बनता है. Time बिल्कुल डॉट बराबर है. देखो 31-1-1. स्क्रीनशॉट 31-1-1 टाइम है. इतना नेक टू नेक चल रहा है भाई. Nice. Setu was not in form in this tournament, bhai. For sure. It was not his tournament. He'll come back stronger in the next one. But Sasi is the one we need in this round. But I still don't like the move f5. But let's see what happens. Let's see. Is Arjun better in blitz and bullet than Fabi? He might be, yeah. He might be because these youngsters are very good. And right now it's again roughly balanced. But we'll see what happens in this game. Why is MVL thinking? यहाँ पे क्या सोचना है भाई? ये तो I mean, this is an only move. और तो कुछ भी नहीं है. मस्त लग रहे हो. डेट पे गए थे क्या? अरे नहीं रे, मैंने बाल मतलब थोड़े से कलर कर लिए भाई. कल एक इंटरव्यू है, उसके लिए बाल कलर कर लिए. स्मार्ट लग रहा हूँ, बताओ यार. सही लग रहा हूँ ना? स्मार्टी पैंट्स. निहाल के सारे गेम ड्रॉ ही है. एक हारा भी है रे वो. निहाल का टूर्नामेंट भी उतना कुछ अच्छा नहीं गया, आई हैव टू एडमिट. लेकिन I would say it's not been bad also. It's not been bad, but it's not been good. Maybe this is the time to shine. MS धोनी जब क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले थे 2011 कुछ में, तो he did not have a good start. He only struck in the finals. तो maybe Nihal has that plan. गंदे लग रहे हो. इंटरव्यू स्ट्रीमिंग छोड़ रहे हो? नहीं रे, स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करेंगे भाई. नहीं भाई, स्मार्ट तो हो ही. सही लगता. थैंक्स लॉट भाई. By the way, he took on c5, knight takes c5 as expected. Now knight to e2 is the most obvious move. I don't know what else you do. I mean, you want to control d4.
And 92 played by VD. VD playing all the best moves today. इंटरव्यू वालों को अपनी स्ट्रीम्स दिखा देना भाई, क्या पता देख भी रहे हो भाई कि वहां पे तो अभी दिन ही चल रहा है. सस्ता गौतम साउंड्स लाइक अ क्लोथिंग ब्रांड बाय गौतम गंभीर अनफॉर्चुनेटली. Okay, 92 played now, and what will black do? I mean, the passive bishop and knight coming to e4, but I control d4 and your knight e4, no dancing, my knight d4, dancing. फिर तो रिजेक्ट कर देंगे. अबे ये क्या है रे, अब तो काफी यंग लग रहा है यार. 29 एज वाइज देर है. क्या बात कर रहे हो भाई, पहली बार किसी ने बोल दिया सही में. आज चैट कितने तक लग रहा है भाई, सही बताना यार. हाउ ओल्ड डू आई लुक टुडे? इफ यू somebody new in the chat, how old do I look? बताओ भाई. Let's see. सच बोलो, इंटरव्यू या डेट? भाई डेट पे कभी पहले से टाइम स्केड्यूल होता नहीं है. 1 घंटे का इंटरव्यू है तो भाई ऑफ कोर्स आई वुड से इंटरव्यू होगा. 69 वाले काफी लोग चैट में हैं, आई नो. 18 कह रहा है एक बंदा, वाह ये तो अलग ही फैंटेसी है भाई. 27, 25, 38, 69, 30, 26, ठीक है. आई कैन सी इट्स बेटर यार. कलरिंग माई हेयर डेफिनेटली हेल्प्स, बट उससे बाल गिरते हैं यार, तो आई कांट डू इट लाइक टू मच. आई यूजुअली डू इट लाइक वंस अ ईयर और समथिंग, जब मेरे को स्पेशल ओकेजन आता है साल में. स्पेशल ओकेजन. इस बार लेकिन वो इंटरव्यू है. बाद में रुक C8 प्लेड. I think now probably just playing bishop d4 or knight d4 or even h3, just normal moves, I think should be fine. You look 24 भाई, इतना तो कुछ ज्यादा ही कम बोल दिया भाई. इतना तो मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा. Which app is this? YouTube सृष्टि. अपनी टिकिया चली खिलाने किसी को? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है. 34 also looks logical. Okay, 30 minutes for VD. By the way, VD का टाइम और मेरी उम्र दोनों बराबर है रे. That's why I like VD. Why is he pinning himself? वो होता नहीं है, खुद को थप्पड़ मरवाते हैं. Why are you hitting yourself? वही चीज है. Why are you pinning yourself? I don't know man. बाकी गेम में क्या चल रहा है? बाकी गेम में भाई निहाल की गेम स्लाइटली वर्स है. बाय द वे, आफ्टर दिस मूव ही प्लेड बिशप d2, b takes and b takes, and again Nihal only has one problem now. This c7 pawn is an isolated pawn, and again white has a more active pieces, so ये पीछे तो कुछ करना पड़ेगा. And if he can bring the pieces into the game, Nihal can hold this. Next we have SL. SL की game काफी slow चल रही है. For the first time I've seen him so behind on the clock. So clearly he's not too happy with his position. He's just played bishop c2. And he's putting pressure on the black king side. But yeah, again, the knights have some excellent squares here. We're coming to f4. The queen can also join someday. And the bishop can also join. So yeah, SL under slight pressure there. Going to Sasikiran's game. Yeah, I don't like this position one bit. That's what Sasi's also thinking. We are behind on the clock on almost all the games chat. So far, not looking so great. Only VD's game seems to be slightly better. All other three, I think we are slightly worse. SL is probably equal, but 2 games we are slightly worse. So VD has to strike maybe again. What do you think of the pollution in Delhi? It's horrible, buddy. Like, I remember, like, when you take a flight and land to Delhi, no, you can literally see a layer. Like, there's a layer. I took a photo of this, I think 6 months back. Layer दिखती है भाई कि खुला आसमान और दिल्ली की वो काला आसमान भाई. इंटरव्यू स्ट्रीम कर दो. हाँ बिल्कुल भाई. पब्लिक ह्यूमिलिएशन मुझे नहीं चाहिए रे, मैं खुद कर लूंगा भाई. वीडी क्लच. आप कहां से हो? अच्छा, मैं फरीदाबाद से हूँ सृष्टि. आई लिव इन फरीदाबाद नेक्स्ट टू दिल्ली. अर्जुन की मैच कहां से चल रही है? टीम चैंपियनशिप के अंदर? नहीं, वो अलग है यार, वो स्पीचेस चैंपियनशिप है. मे बी दैट्स व्हाई अर्जुन डिडंट. अच्छा, अर्जुन का तो सीसीटी भी था. हाँ, सीसीटी ऑल्सो. इंटरव्यू ऑनलाइन है? हाँ भाई ऑनलाइन है यार. Thanks for this anime. By the way, bishop d4 played by VD and black is not. I'd probably knight e4 now. Defending the knight makes sense. You don't really want to go back, right? That should be slightly passive. So yeah, I think it's knight of e4. तब पता चलेगा भाई. नहीं यार. What do you think of water pollution in Delhi? Water pollution यार इतना दिखता नहीं है, तो less comments about that one. फिल्टर लगा लेते, कलर के पैसे बच जाते. ये कह रहे ये फरीदाबाद वाले कब दिल्ली से हूं बोलना बंद करेंगे? अरे मैंने कब बोला दिल्ली से हो भाई? मैंने बोला दिल्ली का पोल्यूशन बहुत खराब है. चैट मिस. अर्जुन वन गेम अगेंस्ट फैबी, बाकी दोनों फैबी मैच होल्ड वर्स पोजीशंस. इंटरेस्टिंग. कौन सा इंटरव्यू है भाई? ससुराल का. नहीं रे, मतलब एमबीए के लिए इंटरव्यू है रे. कुछ कॉलेज में अप्लाई किया है यूरोप में, उसका एक का कल का इंटरव्यू भाई. व्हाट डू यू थिंक ऑफ थर्मल पोल्यूशन? अबे थर्मल अब तुम. Anyways, going to the Nihal Serene game. कुछ चल रहा है क्या? Nihal still thinking, man. 22 minutes for Nihal, going way down on the clock. And SL's opponent is taking his time. Interesting.
Yeah, Sare, everybody is struggling a little bit. I don't get these positive vibes from this round somehow. Everybody seems to be struggling. Do you fumble in an interview or feel nervous as you are very frank in streams? I don't feel nervous, but I think it's like because my interactions mostly are on stream, I can say anything I want to, which you can't do well in any sort of interview or something. So, you know, you have these moments because you somehow are about to say something which you should not, and then you have that so that will be something of a problem tomorrow. Baki nervousness to nahi hai, chill yaar. I am not really nervous about interviews in general. Talking to people is fine. Like streaming really helped with that, right? Because well, right now there are 361 people talking in the chat. So well, talking to one should not be an issue. Preparation क्या है? करी इंटरव्यू के लिए preparation करी है, थोड़ा बहुत करा है. Second stream on same day of second match was unlucky. I know, but this time hopefully we can turn the tables. अपना फेस क्यों नहीं लगाते यार? अपना फेस लगा सकता हूँ, but I think this one अब मैं खुद खेल नहीं रहा ना यार, लोग कंफ्यूज जाएंगे भाई कि निहाल खेल रहा है, वीडी खेल रहा है, ये कौन है? बाय चांस इफ यू सिलेक्टेड यू शुड कंट्रीब्यूट वन जर्नल. अभी ये छी यार. या तो भाई आई हैव अ प्लान. अगले सितंबर का प्लान है यूरोप से करने का. बाकी आई मीन इट्स नॉट कंप्लीटली श्योर येट बिकॉज अभी हुआ नहीं एडमिशन, तो मैंने अप्लाई किया है. निहाल नीड टू होल्ड. या आई थिंक honestly speaking, Nihal has to somehow win a game, man. I don't know, like he's not having a good best of tournaments and right now he's worse again. He needs to at least hold. Sasi needs to hold this. He's not winning this game. And SL maybe has to be the one to strike or VD. One of them have to strike because it is very much possible that one out of Nihal or Sasikiran loses. Live नहीं छोड़ूंगा रे, मतलब चलता रहेगा. But it's like कि मतलब live streaming might die out in 1 year. I think live streaming from YouTube is definitely something which might die out in a year or so. I will of course stream anyways, but I think आजकल लोगों का टाइम कम है and कुछ और प्लान्स भी है, साथ साथ करते रहना है भाई. कुछ अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, कुछ दिमाग में आइडिया है, उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए एंड सो ऑन. किसके साथ इंटरव्यू है भाई? उतना फोन नहीं कर पा रहा हूँ भाई. है भाई, बताऊंगा, कल बताऊंगा उसके बारे में कैसा गया. इफ यू कंसिडर यूएस यू शुड बी. आई डिड कंसिडर एक्चुअली, बट द थिंग इज कि यूएस में इट्स मच मोर एक्सपेंसिव मैन. लाइक इट्स लाइक and I've been to the US. It's like I kind of prefer Europe over US somehow. It's a bit more calm in Europe. Like US में ना इंडिया की तरह भाग दौड़ी है. ये गेम ऑनलाइन चल रहा है ना, ये गेम ओवर द बोर्ड है. दिस इज ओवर द बोर्ड. Do you think Fabi can ever come back to his peak? For me, I think he's past his prime. I think he can. He's not too old. I think he can come back to his prime. But the only thing is, maybe the children's prime, the kids' prime who are youngsters rising, their prime might just be higher. फरीदाबाद में एयरपोर्ट है? नहीं भाई, नहीं. MBA की ट्यूशन फी होती है भाई, काफ़ी ज़्यादा होती है MBA की ट्यूशन फी जर्मनी में भी. It is very high actually. It is very high. MS की फ्री होता है, बट MS का तो it's safer. Like US में I've heard like every third person has a gun in his home. I don't know, something like this, every fifth or something, which to me is ridiculous. I mean, I live in a building apartment of 50 flats. If 5 or 10 of them had a gun at their home, I'd be like, भाई घर के अंदर रहना सेफ है भाई. रेलवे स्टेशन तो है भाई. CS तो भाई ऑफ कोर्स बढ़िया है. GMAT दिया था भाई, GR ही दिया था यार. जब तो एजुकेशन तो कभी फ्री है नहीं. MBA फ्री नहीं है भाई. MBA इज नॉट फ्री. एनीवेज आई थिंक बेसिकली यार, मतलब कई प्लान्स मेरे आई कांट रिवील. लाइक आई हैव सम आइडियाज इन माइंड अबाउट चेस ऑल्सो, लेकिन उसके लिए आई एम नॉट स्किल्ड इनफ, इफ दैट मेक सेंस. Like मतलब अब if I had 1 million subscribers, I could hire people to do it, but I don't have 1 million subscribers, so I can't do it myself. So उसके लिए भी काफी चीजें सीखनी जरूरी है. It's safe in all major cities. भाई आज ही शूटिंग हुई है सिद्धार्थ भाई, आज ही शूटिंग के बारे में पढ़ा मैंने यूएस में. लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग. US is much safer than India, maybe, but Europe is much safer, yaar. I've been to Europe, spent a lot of time there. It's so safe. I've never ever faced any sort of racism. Now it's hard to say ki whether I don't know if that, like, in fact I remember ऐसे cases हो चुके हैं कि I go to Europe and then somebody comes up randomly to me and says, "Are you from India?" I'm like, "Yes." I went to India 7 years back. It was so amazing. I went to Varanasi. I went to this place. And then, you know, if you ever, like, this genuinely happened.
And that lady was like, if you ever come to my country, you're welcome to stay at my home. Please note down my number. ये वो. And भाई मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं उससे भाई, लिटरली ऐसे इंटरेक्शन भी रहे मेरे यूरोप में. और यूएस में तो भाई अलग ही है भाई. By the way, chat, Vidit has equalized. Bishop d4 के बाद Queen a5 के बाद यहाँ Knight f4 was the best move to put more pressure here. But I kind of understand he did not want to risk this. He went for the safer choice, took the Knight, Rook c5, Queen b3, Queen c5, Queen b3. But this is close to a draw because of a lot of piece exchanges. Racism हर जगह है भाई. Racism हर जगह है, but I think you just have to choose the best place for you. I think India में भी होगा थोड़ा बहुत यार. I'm sure people who come to India from other countries, maybe from Africa, face some racism. I think ये हर जगह होता है. We are a bit scared of people who don't look like us, don't talk like us in general. It's just normal human nature. SL, oh no, डराओ मत यार. भाई ये क्या हो गया भाई? भाई रुको भाई ये क्या हो रहा है? भाई SL नहीं हारना चाहिए यार. SL नहीं हारना चाहिए. SL तो हमारा हीरो था रे. भाई ये तो शाहरुख खान पहले सीन में ही मर गया यार. शाहरुख खान को विलेन ने पहले ही गोली मार दी. एक सेकेंड. After knight to h4, यहाँ पे apparently knight to h4 was the best move, which is so ridiculous. I can't even tell you. Bishop g6 was played, also logical, but now instead of ef6, apparently h3 was the best move, which is logical. But now he took on f6 and queen takes and plays bishop g5. But this is better for black. Clearly, we have one isolated pawn here. The bishop is coming to g4. The knight is coming to f4. This looks really bad for SL. Like really bad. Like really bad. So I'm a bit worried for SL here. He was supposed to be the hero now, but he is turning out to be the... Okay, villain is wrong word. Like he's turning out to be struggling here. Racism in South was much more than US. मेरा एक्सपीरियंस साउथ में बहुत डिफरेंट रहा था भाई. व्हेन आई वेंट टू साउथ इंडिया, आई हैड माय इन्फोसिस ट्रेनिंग देयर. लाइक आई स्टेड एट पीपल्स होम्स, people who knew me for like a few hours. So I have to disagree with that. It could be different. Yeah, I've not spent like 5 years in South India, but my experience was quite different actually. Now going to the game of Sasikiran. Sasikiran bhai ka opponent so chuka hai. That's good news. that's one good news. He slept for a while. That too alone. So maybe there's some hope for Sasikiran there. Going to the Vidit game now. He plays the move Rook c1. Attacks the queen. The queen goes to d6. But now the problem here is, yeah, we have the isolated pawn, but it's just imbalanced. This is one weakness. We need one more. We don't have the dark square bishop now. That is the issue. If we had the dark square bishop on b2, I would say VD is clearly better. But without the bishop, yeah, it's probably close to equal. If France wins, we have tiebreak. Chat blitz ka tiebreak hoga. Yeah, VD has to somehow strike, because I can see India is worse on many boards, and VD has some chances at least. How do you make a living? Through multiple sources. यार कुछ करके हो जाता है. Do you work in Infosys? नहीं यार, I used to work पहले, बहुत साल पहले. 2014 में I worked for a year in Infosys. क्या हाल है चिन भाई? Ireland and people are more welcome. Never face racism. Yeah, it depends. I think the more experience you have living abroad, the better you get at kind of mingling with people. Because for example, let's say कि तुम्हारे there is a culture जहाँ पे high-fiving is wrong. And you don't know that. Like if you go and high-five somebody, they're going to think you're a creep. Like in India में it's normal. So it depends on the culture, I think. वर्स अगस्त कितना पैसा है? बस भाई इतना पैसा है कि बैंक मुझे रोज कॉल करता है कि मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करो. Verse on all 3 boards. I know, man. It doesn't look good. What's happening in Arjun? Arjun, by the way, is 2.5, 1.5. So he is leading still. सब introvert हो जाएं तो no racism. That's true. But अंदर मन में तो रहेगा ना यार. Anyway, chat, back to the chess. Focus on the chess, because critical matches, quarter final चल रहा है, semi-final qualify करना है. Come on. VD is also falling behind the clock. By the way, chat, something happened here. After knight d8, d4 was played, the best move yet again. E takes d4, and now white is thinking. I would say Nihal still has chances to draw this. I think white will probably have a very particular sequence of moves to win this, which will not be easy to find, because at the end,
if you trade these two pawns, it's a dead draw. So it's not going to be easy. I've never faced them in US for far within the 6 years. Yeah, it depends. I think it depends on luck, depends on your kind of nature you have and so on, how well it can mingle. By the way, Queen F7 played by Sasi's opponent. Sasi needs to somehow do something about this. Maybe start with Queen D2, unpin this knight, taki Bishop G4 pe we can simply play Knight E5 maybe, and also kind of defend F2, yeah, that's one more advantage to this. I would love to put the Bishop on G3, but I can't because H4 is controlled. So... you can play Bishop E3, that makes logic, but I think you block your rook also. So it's it's like a passive move, so to speak. If India loses, chat, then we'll have a tiebreak. Blitz tiebreak 3+1. Now it'll be fun to watch, but I don't really want to see it. I want a clean win. We have won the first match. Let's finish it off. Rishi ko UK PM से निकाल देंगे in a few days. भाई UK में तो भाई हर महीने नया PM आता ही है. वो normal है भाई. What's your name after search? Chiku. I am getting Oliver Chiku. My name is Tikku bhai. TICKO. Sahil Tikku, not Chiku bhai. Chiku तो fruit है. MDI players revealed. मतलब कहाँ के players भाई उनके? Has SL has a chance to hold? I guess he does, but it will not be easy. And if anyone is in US, one of the most reasons being that I never been to US. Youngsters are better at short and control. True. अच्छा, Mr. Dodgy internet. Okay. Yo, शौनक भाई क्या हाल है? कोई इंडियन है उसमें क्या प्रांजल है? Is there any Indian? SL taking his time so far. SL has been playing some amazing chess. I really hope he continues. I've been in South for 3-4 months and I've seen too much pride. Okay. कोई funny opening line बताओ please. कोई going to talk to a girl after a long time. अबे funny opening line क्या होता है रे? मतलब the fact that इतना तुम स्ट्रेस ले रहे हो is probably not correct. भाई जाके chill करा यार. इतना सोचो मत, जो मुंह से निकलेगा निकाल दो. Tie breaker would be fun though. It would be, as long as, imagine if France gives us in writing, you know what, you are going to win in the tie breaks. I would say let's go to the tie breaks, but I don't want to risk it. कौन किसको पेल रहा है? अमरीश भाई कैसे हो भाई? पहला मैच तो इंडिया जीत गई, बट दूसरे मैच में क्या करें? I am not an artisan, neither very religious. I am somewhere in the middle. By funny opening line would be E4, E5, knight C6, knight C6, D4, D4, knight D4, Halloween Gambit. भाई कोई नहीं खेलेगा वो. By the way, Queen need to play good move by SL there, unpinning the knight beforehand, defending F2, connecting the rooks. Also keeps an eye on this pawn, keeps an eye on the bishop. Very multi-purpose move now. Going to the game of Sasi Kiran now. Sasi Kiran, by the way, has improved his position drastically. After B5, white shouldn't. Probably knight A5 was interesting. He instead took on D6, but this allows Sasi Kiran to take with the pawn now and get rid of his weird pawn structure. Now it's still a bit weird because of B5. I wish the pawn was on B7, but still much better than it was early. This is much better than this, yeah. Very weird E5 pawn, and that gives Sasi Kiran huge drawish chances, especially because the bishops are of opposite color now. So I think Sasi might hold this. Going into the game of SL is still fighting. Going to Nihal Sunny's game. His opponent is taking his time, but that means the time has equalized, but still Nihal is slightly worse. For that, white has to take with the knight. Let's see, maybe he takes with the pawn and equalizes. Who the hell knows? Going to VD's game, by the way, after the rook c1, queen e6, a5 was played by VD, and black plays rook to c7, trying to trade all the pieces. I think MVL noticed that, this is very difficult for him to win this game, especially this pawn can be attacked by this bishop maneuver, and because white does not have a dark square bishop, it might be a very risk-free way for black to play to exchange rooks. On the other hand, white is also fine, probably just takes, and putting the knight, like giving an escape route to the king to h2 or something, then putting knight f4, knight d4 is very solid for Vidit. But can he win? Very unlikely. Sheetal Randhave. Who's Sheetal Randhave? Sasi probably hold, not sure about Nihal. Yeah, man, I think both will hold. My guess so far, Sasi holds, Nihal holds, VD draws. And I think SL's game might be the critical one. By the way, bishop b8 played, which is not the best one. Apparently, both knight c5 and queen b4 give a chance to SL to come back. Although very difficult move to play queen b4, yeah, because you want to stay on the king side, keep this everything defended. रवन ददले लिखा है, कौन है भाई वो? यो सॉच किंग भाई, क्या हाल है, कैसे हो भाई, क्या चल रहा है आजकल, कहाँ पे हो जर्मनी में?
I hope SL indeed. My opponent MVL है अभी देखा लो. I was thinking VD won't take a draw here. MVL तो ले भी सकता है. Although he did defeat MVL in the last round, so if it's required to go for a crazy win, he might push. Do dance for good luck. भाई डांस गुड जीतने के बाद होता है भाई, पहले नहीं होता भाई. You don't celebrate beforehand, you celebrate later. I think that's pretty obvious at this point. मुझे नहीं पता वो कौन है ये कह रहे. SL great form ain't, he's in great form. Yeah, so I expect him to come back. By the way, knight e5 played by SL, which is apparently not a excellent move, because after bishop takes e5, if you take with the pawn, for example, now black can play the move h6, and the bishop actually has no good squares. So did SL just blunder a pawn or something? Because this is covered, so the only square is e3. But now your king is kind of weak. Now this would still allow bishop c5, so it doesn't work directly, but probably just knight h4 with queen g6 incoming. I think SL is under huge pressure. VD blunder what? How? What the hell happened here? Oh, why did he play this? Why did he allow this? What the hell is this? Isn't he just losing a pawn for free? What the hell was queen b6? I don't get it. What the hell is queen b6? I mean, just take. It's so simple. Takes, knight d7. What is the plan? Is it knight b3? That knight b6, you have knight c5? Is that the plan? But, what else can you do here? Wait. Here, bishop c3 now. Oh, we might just lose this. And if king f1, then we just play king f8. We just wait for the right moment, bring the king first to d6, and then we take the pawn. I think Chad VD might just lose this. Crap. He took the queen, took the rook, and played knight d7. Chat, I think we are going to the tie breaks very likely. By the way, chat, Arjun has won a second game now. So Arjun is leading by 2 points, and that is awesome. So if, okay, tie break hua to hua, but for now, who can come back for India? Does Nihal have any chance? I see no chance there for Nihal. Absolutely zero chance for Nihal to win this game. Going to Sasikaran, can he be the hero? He could be, but it's like so drawish this position. Going to the game of SL. SL, by the way, 95 black did take with the bishop, pawn takes, and he did find the move h6, bishop e3. SL is also losing. Everybody is losing. What the hell is happening, chat? What the hell is happening? हम जितना पेल रहे थे उतना ही पेल रहे हैं. I mean, it's like, you know, you have normal sex and suddenly the girl is like, I also want to do it. That makes no sense. What the hell is this? Everybody is losing literally. Fall में most likely भाई, fall में most likely fall में. It's like एक दिन दूसरे दिन हारेंगे. ये क्या हो रहा है भाई? हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हार रहे हैं. याद है कुछ लोग कह रहे थे, मैं भी था उनमें से, कि आई थिंक इट इज अनफेयर कि हम 3-1 जीतेंगे, वो 2.5 जीतेंगे तो हम हार जाएंगे. मे बी दैट वाज फॉर द बेटर, या, बिकॉज इट इज पॉसिबल वी माइट लूज इवन 3.5 हाफ. ऐसा होगा तो इंडिया नहीं. भाई जिसने ज्यादा कुछ हब्स पे रिसर्च करी उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं. एनीवेज, 9 decent guys. VD is struggling, chat. I don't think he'll survive. I think VD is lost. So VD is lost. The A pawn will win the game for MVL. That was a simple blunder. I don't know what he missed. कर सकते हैं draw, but कैसे यार? The thing is, कहाँ से वो point आएगा? So VD is losing. He's simply a pawn down. Hoping, considering that MVL doesn't take it immediately, but he will not. Yeah, he's not stupid. He's like world top 10 player at some point. So I think MVL will not blunder this. But coming to Nihal's game, can Nihal win this really? कहाँ से जीतेगा यार? कोई चांस ही नहीं है. I just don't see how. The bishop is so better. White's bishop is better than this bishop. This bishop is equal to this bishop. This knight is equal to this knight, and this knight is equal. So I think white is the better piece. Because of this bishop, white is slightly better. So यहाँ पे I'm expecting a draw. यहाँ पे expecting a loss.
एसएल गेम में तो चैट एसएल का ओपोनेंट अगर नाइट h4 ना खेले इस मूव में, आई थिंक एसएल हैज अ चांस, एसएल हैज चांस, बट नाइट h4 नहीं खेलना चाहिए. अगर उसने खेल दिया तो एसएल के तो लग गए. एंड आई विल टेल यू व्हाई. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू Sasi Kiran's game. Sasi, by the way, f4 played by white, ef4, bishop f4 and c5, a blunder by Sasi as well. भाई चल क्या रहा है? सारे हार रहे हैं भाई, भाई सारे हार रहे हैं यार. क्या चल क्या रहा है भाई? भाई चल क्या रहा है यार? भाई हो क्या रहा है यार? What the hell is happening? I don't know, chat. Now c5 makes some logical sense to put the bishop here, but I just get this feeling कि ये bishop मारना जरूरी था यार. You have to take this. This is a strong bishop now. So going to the SL game, and he plays knight h4. He plays knight h4. And chat, the problem is, let's say you play a random move rook to b1. Let's just say this happens. यहाँ पे even bishop h3 is possible, winning on the spot. It's winning on the spot because takes allows queen to f3 mate. And even if you play a best move, in fact the best move here is king h1, but black here plays the spectacular move knight takes g2. And if king g2, then queen f3, king g1, bishop h3 is mate. So you can't take this pawn back. You have to play rook to g1, which is, I mean, maybe you play this and survive on a good day, but I mean, just like Good Day Biscuits, this game will also not survive the new age of Oreo biscuits. I think this is gone, and everybody is losing. Chat, everybody is losing. Literally, everybody is losing. I just don't know what to make of this. Why is everybody losing? Let's do an update on all the 4 games again. कोई है क्या जो जीत रहा है? 4-0 ना हार जाए भाई. Going to the chat, after the move knight d7, we did play knight b3 as expected, and MVL did find the best move, bishop c3. This basically prevents knight a5 and waits for the black. So if you play the knight b6 immediately, knight c5 draws the game because you attack both pieces. So what black needs to do is control both these squares, and before he captures, as simple as that. So he plays bishop c3, controlling a5. c5 is also controlled. Now he'll bring the king to d6, control c5, and then he will take. It's just a pawn up. There's nothing we can do. Nothing we can do. It's completely lost. Going to the game of Nihal. Nihal is the only one who can hold this. Nihal ही बचाएगा भाई full white was से. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved on me. Goodbye, goodbye, goodbye. ये कह रहे. Would you like to leave chess forever for $1 billion? 100%. $1 billion भाई अच्छा है ना. अब फ्रांस की टीम बोलेगी बोर्ड पॉइंट्स तो काउंट होने चाहिए. एग्जैक्टली अच्छा है, बोर्ड पॉइंट्स काउंट नहीं हो रहे. बच गए चैट, बच गए यार, बच गए भाई. 95 निहाल स्टिल, आई थिंक आधा पॉइंट यहां से आ सकता है. बाकी हम कहां से पॉइंट ला सकते हैं चैट? कहां से पॉइंट ला सकते हैं यार? रुको रुको चैट. अच्छा ये नहीं, माय बैड, मेरे को लगा इक्वलाइज कर लिया ससी ने. 4-0 नहीं हारेंगे, 3.5 हाफ हारेंगे. दैट डजंट इंस्पायर मी भाई. बिक गया टिक्कू हमारा 1 बिलियन में. भाई 1 बिलियन में तो है ही भाई. 1 बिलियन में कौन नहीं बिकेगा यार? हर किसी का दाम होता है भाई. विनिंग कितने पैसे भाई? आई थिंक प्रॉब्ली सम टेंस ऑफ मिलियंस या. एनीवेज, गोइंग टू विदित गुजराती. 1 मिलियन में नहीं यार, 1 मिलियन इज नॉट इनफ. मोदी जी कह रहे हैं नॉट मी. मोदी जी चेस के बड़े फैन है. मोदी जी कभी नहीं छोड़ेंगे. 10 के उसी में भी कर देंगे साहब. नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. बाद में कम ऑन वीडी चैट, इज देयर एनीथिंग वीडी कैन डू नाउ? लाइक जस्ट टेक अ लुक एट द पोजीशन. What can he do? Like 94. Okay, let's try to do something. King f8 and now knight to e2. The plan is to attack this. So if you go back, I again get knight f5, but he will go bishop b4. And you resign, yeah? And you resign. So not working chat. I think not working at all. Arjun game important. I know. I will give 1k to forget chess. Ye kya hai bhai? Going to the game of Arjun, by the way, still crushing Caruana. Going to Nihal Sarin's game. Nihal पहले तू तो ड्रॉ कर ले भाई. 4-0 नहीं पिलना यार. 4-0 पिल गए तो लोली हो जाएगा भाई. चार्ट लगता है ब्लिट्स आने वाला है भाई. टाई ब्रेक 3+1 ब्लिट्स आने वाला है. आपको रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी गिफ्ट कर देंगे. बिल्कुल भाई, मुकेश अंबानी का कोई काम धंधा है नहीं भाई. वो तो खुद दुबई जा रहे हैं इंडिया छोड़ के.
शौनक इज लाइक अर्जुन का गेम काउंट हो सकता है क्या? हाँ, पिछले वाले का भी गेम का भी आधा पॉइंट कैरी फॉरवर्ड कर लो। 3+2। हाँ जी मोदी जी, एनवीएल ब्लंडर कर दे बस। एडवांटेज फ्रांस नहीं, फ्रांस इज क्रूजिंग। लाइक वीडी का तो मूव मुझे समझ ही नहीं आया भाई। व्हाट द हेल वाज क्वीन B6? It makes no sense whatsoever to even allow this. Like no sense. This was just I think a mind slip or something. I think MVL blunder. There's no way he can blunder by the plan. Once he plays because the plan is very simple. अगर अभी अगर 4-0 तो इंडिया का चांस ओवर ना। नहीं, they will be tiebreak regardless. कैसे भी ससी बैक नाउ। क्या बात कर रहे हो भाई? Oh, luckily black ने भाई वो यहाँ पे चैट bishop e3 was a crushing move not to exchange the bishops because black is not developed enough. He plays knight e4, not the best move, and this gives Sasi a chance to play d5, which he does, and that means Sasi is coming back in the game, this is now close to equal chat. This is very close to equal again. So Sasi I think will hold, so we'll get 1 point. 1 पॉइंट और कहां से आ सकता है भाई? ड्रॉ चाहिए भाई। लडविग फैन प्लान इज सिंपल। एग्जैक्टली। क्या निहाल पुल ऑफ एन अपसेट चैट? आई थिंक निहाल के हाथ में अब सब कुछ है भाई। निहाल नीड्स टू इंड्यूस अ ब्लंडर फ्रॉम मिस्टर जूल्स मोसाड। वीडी ने फ्री में पॉइंट दिया यार। इफ वीडी हैड ड्रॉन दिस गेम, निहाल माइट हैव ड्रॉन। इन एसएल होल्ड्स, मे बी देयर इज अ चांस। अरे एसएल तो खत्म हो चुका है रे। एसएल्स गेम इज ओवर। सबथॉन देखा? इस बार वाला मैंने कम देखा रे। इस बार तो गया रे। क्वीन E2 एंड क्वीन G6 आई थिंक इज लूजिंग ऑन द स्पॉट। हाउ डू यू डिफेंड दिस? क्वीन F1 बिशप H3 खेलूं कि नाइट F3 खेलूं कि आई थिंक बिशप H3 wins on the spot. Yeah, it's over. So what do you do now? There's no move. I mean probably F4 is the best, but then bishop H3 anyways. And G2 गया। जब G2 जाएगा तो भाई क्वीन F2 now to try and go to G3. Knight takes G2. Oh. Even just simple chess. Can white hold this? Maybe. I mean, some control on the dark squares. Maybe there is some hope for if we reach this endgame. Maybe some hope. But I don't think we'll reach that. I think black will find some other crushing victory. Yeah? माइंड स्लिप पहली बार सुना है भाई। जो ऐसे को जिंक्स कर दिया आपने भाई। मैंने कुछ नहीं किया रे। बड़े दिनों बाद इस गली आया। हेलो टिक्कू। हेलो अशिल भाई, क्या हाल है? बिशप C5 knight D4. Yeah, there's some dark square blockade, but let's see how black plays this first. By the way, knight G2 is also a possibility here because if you take with the king, your king will get assaulted crushingly. First queen G6 check, king H1, and now bishop to G4. Bishop F3 is incoming. Let's see what happens. This is the current position. Laurent Fressine ने भाई पूरे ले लिए भाई। F4 played by SL. Good move there. Good practical try by SL at least. And now bishop S3 is the only move for black, but he will find it. Going to the game of Nihal Sareen, who's still fighting for equality. He probably has close to it, but let's see. Going to Vidit Gujrathi. Is there any hope? After bishop C3, he did play my move. He's literally playing my moves. King F8, king F1. But it's not enough somehow. The king will come to D6 and then he will chop this off. ऑलरेडी लूजिंग है। उम्मीद करो भाई। अब तक एमजे दूर रहा है तो इंडिया ने अच्छा किया है। एमजे को दूर रखो भाई। वीडियो ने हाथ में दे दिया है क्या भाई? आई हैव टोल्ड यू बिफोर एंड टेल यू अगेन, एवरी टाइम यू एंड द स्ट्रीम बिटवीन मैचेस इंडिया विल लूज द सेकंड वन। व्हाई डिडंट यू लिसन टू मी? तो क्या भाई फिर स्ट्रीम ऑन छोड़ देता क्या? वो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट कैसे अजीब लगता है रे। सेकंड राउंड बिटवीन इंडिया फ्रांस एंड वेयर अर्जुन कारोना प्लेइंग। अर्जुन कारोना इज प्लेइंग स्पीचेस चैंपियनशिप। आपका यूजर नेम वही है। एंड यस, दिस इज सेकंड राउंड इंडियन फ्रांस। टाइम कंट्रोल इज 3+2 फॉर ब्लिट्स। सखा भाई ने ऑन छोड़ी थी, बट वो फोटो ही थी ना यार एट द एंड, तो वो तो एक ही बात है यार। छोड़ो ना छोड़ो। Knight king D7 played. The king is coming to D6 chat and the पियादा is गोनवा। दिन भर यूपीसी कोचिंग करो और शाम को ये देखने को मिलता है। कोचिंग लेते हो कि देते हो भाई? टिक्कू इज द कल्प्रिट। वाह। ससी ड्रॉइंग। हाँ, 2 लोग ड्रॉ कर देंगे। Maybe Nihal and Sasi draw, but it only gives us 1 point, chat. It's not enough. By the way, bishop S3 played by Laurent Fressine, and that means SL is losing. 3+2. So Nihal coming from Saudi Arabia. तुम्हारी वजह से हारेगी इंडिया। वाह। जब जीत रहे थे तब तो बोला नहीं मेरी वजह से जीत रहे थे हैं। हारना मेरी वजह से।
What if Sasi and Nihal win? But how? How will they win? Like, I mean, Sasi has an opposite color bishop endgame where he is slightly worse. It's literally impossible to imagine him winning. And for Nihal, it's just too simplified now. And in fact, he is slightly worse with the isolated pawn. So I just don't see how he can win this unless the opponent blunders the piece or something. ठीक भाई, फ्रांस का करो, जिंक्स करो भाई. अब तक हमने कुछ जिंक्स विंक्स नहीं किया. इंडिया क्वालिफाइड. Have faith our team will qualify. Faith is important. Why no Prag? Prag was playing CCT by. VD losing, yes. I'm sorry that I was able to supply VD moves. ये कह रहे नहीं, जिंक्स करो. नहीं भाई, अर्जुन का स्कोर अपडेट कर दो भाई. अपडेट तो होना चाहिए यार. Why is it not updating? I don't know. Let me refresh. अर्जुन का स्कोर अपडेट होना बंद ही हो गया यार. दैट्स इंटरेस्टिंग. ओके, लेट मी जस्ट क्लोज दिस देन. अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो भाई फिर क्या कर सकते हैं यार. देन देयर इज नो पॉइंट, राइट? लेट मी क्लोज दिस एंड या इट्स बीन डिलीटेड. देख लेंगे भाई. आई विल शेयर द रिजल्ट्स. आई विल शेयर द स्कोर मैनुअली या बीच में. आई विल कीप शेयरिंग इट. गलत पेज कर दिया फ्रेश. नहीं भाई, सब बाय द वे ये क्या है भाई? वी गो हियर. चैट बार देखो रे. बार तो बिल्कुल भी इंडिया के फेवर में नहीं लग रहा कोई भी भाई. सारे बार काले काले लग रहे हैं भाई. आई डोंट लाइक ब्लैक बार्स, आई हैव टू से. लॉरेंस आल्सो इन मैग्नस वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम, राइट? यस, आई थिंक ही वाज. टिको ने चेस को जिंक्स कर दिया है. एनीवेज, गोइंग टू द गेम ऑफ विदित अगेन. क्या चल रहा है भाई? ओके, आफ्टर द मूव किंग. ओके, वी हैड knight e2, bishop b4, knight c1, knight b6. Now that he controls c5, knight a2, bishop d6, knight a5, and bishop to c8. Yeah, it's just done. Sasi blundered. Come on, Sasi. No, Sasi. Abe, queen d7. Interesting. Apparently, rook f1 was the best move. Queen d7 also kind of makes sense, but yeah, I don't know. Black bars बोला मैंने यार. एमवीएल को सीसीएल में नहीं आना क्या? भाई यही पूछना पड़ेगा. एमवीएल को सीसीएल नहीं आना क्या हमको? टाई ब्रेक तो होगा. एग्जैक्टली. नाउ ओनली ओपोनेंट टीम कैन सेव अस. एग्जैक्टली. या आई एम हैविंग फेथ भाई. आई हैव फेथ. भाई ये क्या हुआ भाई? रुको. आफ्टर बिशप h3, यहां पे क्वीन f2 was the best move, but he played g3 and now bishop g4, queen f2, knight f3 check, and we have lost the exchange. Yeah, I don't like this one bit because we need the bishop. I think Sasi is over pushing, seeing two boards. I don't think he's in any position to over push. He's underdeveloped by right now. White is fully. I don't think that's going through his mind right now. He's thinking how to save himself. India in round 2. Yeah, India is definitely not playing well in round 2, right? Not well at all. I don't know what's happening. It does not look good, chat, for India. विदित रहते हैं टिक्कू की तरह खेलने लग जाता है. ब्लिट्स में देख लेंगे. That is the hope. Okay, king h1, knight takes e5. भाई वो रुक तक नहीं ले रहा भाई. इतना खतरनाक फॉर्म में है. He's not even taking the exchange. वो पॉन ले रहा है भाई. He wants to maintain the initiative. He wants to come back, play queen h5 and mate. Can we see tricky Nihal? What's happening? Nihal has equalized, chat. The good thing is Nihal has completely equalized. It seems like it. But the bad thing is कि भाई it's not enough. One draw will not be enough. I know why India never wins round 2. अब ये बताओ somewhere कि do we continue this stream for the tiebreak or do we end the stream and start again? ये बताओ मुझे. ससी खुद की डैश आप पुश. अरे यार वही मैं कह रहा हूं. दिस लुक्स वेरी डिफिकल्ट. निहाल को भी सीएसएल का लालच दे दो. अरे निहाल को तो खेलना ही है. अरे कंटिन्यू ना. बस ठीक है, कंटिन्यू. ठीक है. गोइंग टू वीडीज गेम. एनी होप? क्या नहीं यार. वी नीडेड नाइट बिफोर मैन. आई डोंट मेक द रूल्स. ठीक है भाई, कंटिन्यू. ठीक है. चिंग्स कुछ नहीं होता. बढ़िया भाई. एक काम करते हैं. ये क्या है रे? प्रेयर स्टार्ट्स. ये क्या भाई? ये वाली स्ट्रीम पनौती स्ट्रीम है. इसी स्ट्रीम में बदला लिया जाएगा. इंडिया के द्वारा फ्रांस के अगेंस्ट ब्लिट्स में हम वापस आएंगे और धो डालेंगे.
Don't worry, chat. Indian players will be back. Take Sethu in place, Sasi in blitz. Sasi is not a blitz player, but is Sethu in great form? Can India promote Nihal at board 2? New stream, please. We'll see how it goes. The French Revolution. एक बार बोल दो मुझे कॉलेज में ना मिले अगली साल भी इस स्ट्रीम में आप जो भी बोल रहे हो उसका उल्टा हो रहा है, ये कह रहे जब तक इंडिया में टिक्कू जैसे प्लेयर होंगे ऐसा ही होगा। अर्जुन 4.5, फैबी 1.5। मेरी नाक में खुजली हो रही है, नॉट अ गुड साइन। फ्रांस से हारने के बाद इंडिया बाहर जाएगा? नहीं नहीं यार, we'll have tie breaks. Is there any hope whatsoever? SL, come on SL, you can probably do something, man. Ooh, this looks terrible. If you take the bishop, the pawn takes with knight, जिंदगी भर f3 में बैठेगा यार। बट मारना ही पड़ेगा, और क्या ही करोगे भाई, मारना तो पड़ेगा ही। There's nothing else to do. वर्ल्ड टॉप 10। हाँ भव्या भाई, न्यू स्ट्रीम स्टार्ट, वील सी हाउ इट गोस। पहले देखते हैं इस गेम में क्या होता है। नासिक तेरे नाम क्या है रे? MVA versus Nihal. I didn't saw match 1v1. I started watching match 2 at 10 PM. Vidit blundered there only. Yeah, I think India won the first match, so we're not risking anything yet. अभी tie break बाकी है. But the issue is blitz में कुछ भी हो सकता है यार. Blitz में it's like random. And I really don't want to India to lose and get knocked out. This is knockout chat. Blitz में अगर India tie break में हार गई तो India is out. And if India win, then France is out. We want India to win. SEC कब है? SEC I think start हो चुका है. Right now Caruana is playing Arjun, and Arjun is crushing Caruana with a 3-point lead, 4.5, 1.5. So Arjun is likely to win. MVS nahi, I think you cannot change the border like that. Vidit will always be ahead of Nihal. FIFA देख रहे हो भाई? यहाँ FIFA फीफी सारे निकल रहे हैं हमारे यार। क्या FIFA देखूं यार मैं? क्या देखूं मैं FIFA? दिल टूटा यार। इस हरी बिजी अरे ये क्या है रे? मुझे क्या पता हरी का है रे? क्वीन सरका के नाइट पे अटैक कर दो भाई। नाइट F3 चेक पे एक्सचेंज मार रहा है, तुम क्या सरकाने की बातें कर रहे हो? Nyal is also Blitz King. I know, but that's online chess. Over the board easy. I'm not so sure it's as good as online chess. Enjoying life, bro. Ronaldo playing. Nice. अर्जुन को बक्स दो। Queen C2. वाह वाह, क्या मूव है। This drawing of winning game was not a good look. Bad Mojo started from there. Maybe it's possible that was the upset. By the way, for now, Sassi is also slightly worse. White took on F7. Queen takes knight D6. Queen G6 now is the only most logical move. Then I think you'll have rook E1, and black will have to develop very, very quickly to equalize. Try to read Federation International de Essex. Essex मुझे पता नहीं कैसे pronounce करते हैं यार। I've studied French during my school, so I know a little bit. Federal International de Essex का मुझे पता नहीं कैसे बोलते हैं। Why to lose, guys? You can just win. वहान भाई सबसे optimistic भाई। Why to lose, guys? We can just win. Just win. Simple. Essex करते हैं भाई, ये क्या है? MVL Blitz champion. I know. शशि का रूम A8 पे नेटफ्लिक्स कर रहा। I know, right? Going to Vidit's game. यार VD ने यार क्यों खेला वो? King E2, King D7, King D2, King C7, G3, Knight A4, King C2, Knight C5. Yeah, man, this is gone. Score matter नहीं करता. If France wins, there will be Armageddon. भाई स्ट्रीम की गलती नहीं है, व्हाइट पीसेस की गलती है। ऑफ कोर्स यार, मतलब स्ट्रीम की क्या गलती भाई? एलेक्सा प्ले हनुमान चालीसा। तुम्हारी हंसी देख के मुझे हंसी आ रही है, तो अच्छी बात है ना यार, हंसी आनी चाहिए, हंसते रहो। चाहे हमारी टीम हारे तब भी हंसते रहो भाई। What a game. Caruana has more faith in Arjun to cover on top H22, but now he must be rating. True. FIFA में भी अपसेट्स हो रहे हैं, यहाँ भी। थैंक यू भाई। अच्छा है क्यूमुलेटिव स्कोर्स नहीं है दोनों राउंड्स के। एग्जैक्टली, अच्छी बात है भाई। व्हाट डू यू थिंक ऑफ ब्लिट्स, हु आर गोइंग टू विन? चैट ब्लिट्स में क्या लग रहा है यार? VD against MVL, I have to say MVL should be favorite. Then Nihal against Jules, Nihal has to be favorite. SL against Fressine, I'm not sure exactly. I think probably SL. And then Sasikiran against Tigran, not sure at all.
अपसेट हमारे दिल के लिए, अरे हमारा दिल अपसेट हो रहा है कृष्ण भाई, पेपर पे कुछ भी हो। आपसे हार अर्जुन की निवेदन है, अर्जुन के गेम से दूर रहो। प्ले विद अस आफ्टर द मैच, नहीं रे प्ले विद अस क्या है रे, यहाँ पे मेरी फीलिंग्स तक खेला जा रहा है भाई। Ronak is not there भाई। मास्टर स्ट्रिक्शन निहाल विन, इंडिया शुड होल्ड फर्स्ट एंड फोर्थ बोर्ड इन ब्लिट्स। एनवीआर ब्लिट्स चैंपियन है, फेवरेट तो होगा ही, ब्लिट्स में हारने के चांसेस ज्यादा हैं, कभी ब्लंडर हो जाता है टाइम में। ट्रू ट्रू ट्रू। और 3+2 है, इट्स नॉट इवन लाइक 5+2 और समथिंग, तो पूरा वर्ल्ड ब्लिट्स की तरह है। अगर ब्लिट्स जीत गए तो हम सब जूम मीटिंग पे आके नाचेंगे। नाइस, रात को 1 बजे नाचने का खूब 12 बजे नाचने का मन है भाई। हु चूजेस हु प्लेज, द टीम कैप्टन्स। नाइट B4 से क्या ही होगा यार, just takes on D3, nothing changes. Oh, knight B4 पे knight D3 maybe knight D5 क्या? Like knight D3 पे I have knight D5 maybe, and it's again draw. So maybe not knight D3, maybe just defending the pawn like bishop E6, yeah. But yeah, knight A6, bishop A6, there's king B6, and it's a double attack. So he plays knight E4, and we plays knight E4, also logical. Hey Devansh bhai, कैसे हो यार? Chat, I know this feels low, but the thing is, India won the first round, so we are not at all at risk. In fact, we will go into the blitz, and who knows, we might still win. So it's not a big deal even if we lose this one. But yeah, how we lose matters. We should not lose like 4-0 or something. पूरा momentum shift हो जाएगा, because we won 3-1, तो उससे बेकार नहीं जाना चाहिए. Going to Sasi's game, Sasi is still thinking. Going to SL's game, SL के जो लगे पड़े हैं भाई, बड़ा डर लग रहा है देख के भाई. King G1, knight E4, okay, King G, Rook D1, knight F3, King F1. Yes, this is the position. अब तो सारे पॉन मर रहे हैं भाई, किंग भी मर रहे हैं भाई, एक चेक चाहिए and it's over, you resign. If India win this match, I will start banging of SL screaming, go Corona, go. If India wins this match, ये वाला मैच, if India wins, like ये classical, ये rapid वाला है, if India somehow wins, like, or even like somehow manages to win in the rapid, भाई I will give out a pizza confirm pizza एक बंदे को मेरी तरफ से भाई, Domino's का delicious cheese burst pizza. SL has to be given respect to country inspiration. Yeah, respect की बात नहीं है यार, this is the king is just gone. बाहर से बहुत लेट हो चुका है, 12 is too late भाई. सिर्फ पिज्जा तो भाई क्या करूं, मैं करोड़पति नहीं हो रहा, मेरे पास 25 लाख के स्पॉन्सर नहीं है भाई, जेब से दे रहा हूं. इवन ड्रॉस देन इट विल बी अ मिरेकल. एग्जैक्टली, रुक भी नहीं लिया उसने, एग्जैक्टली उसको पता है रे बैंक अकाउंट एम्प्टी हो जाए, कॉल आएगा, कोई बात नहीं भाई, चैट के लिए करने को तैयार है, हम चैट के लिए करने को तैयार है भाई. इमेजिन एसएल विनिंग. इफ एसएल विंस दिस, उनको प्रायोरिटी पे अर्जुन अवार्ड देना चाहिए. Why am I going if India lose this round to India's 3-1? नहीं, it doesn't matter किस पॉइंट से हारते हैं. What matters is कौन जीता. 9 मिनट है एसएल के पास. I don't think he'll do anything. Queen H3 आ रहा है यार, it's just over. Queen H3 क्या, Queen G2 भी नहीं खेल सकते, बस Knight D2 check and you lose the Queen. Do you follow FIFA? I've just seen the score of a few games. I don't follow it religiously. GM बनने के लिए पैसा क्यों लगता है भाई, कोचिंग के लिए और ट्रैवल के लिए. If SL wins, then Vanchu could be. If SL wins this, I think सड़कों पे निकलना पड़ेगा हमें भाई, जीतने के लिए भाई, सेलिब्रेट करने के लिए. इमेजिन करो भाई, द वे इमेजिन यू आर अ हार्डकोर चेस फैन, ठीक है, तुम हॉस्टल में हो या घर पे हो या तुम अपने घर पे जॉब करते हो, व्हाटएवर इट इज, एंड देन इंडिया विंस द ओलंपियाड और वर्ल्ड टीम्स या व्हाटएवर, एंड यू आर सुपर हैप्पी एंड यू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, इंडिया इंडिया, भाई पूरी सड़क पे खाली तुम ही हो. एक ही बंदा सड़क पे है भाई, बाकी लोगों को पता भी नहीं क्या हुआ. दे लाइक अबे पागल हो गया क्या. क्रिकेट में तो पूरा इंडिया उतर आता है भाई. बहुत दुख होता है भाई, आई नो. वीडी भाई कुछ चमत्कार करेंगे क्या चैट. F3, knight F6, knight C3 and then H5 still looks lost. नहीं पुष्पा जी आप ट्राई ना करें. एंड ये कैसा नाम है लड़के के लिए पुष्पा, ये क्या है रे, आपकी मॉम का अकाउंट है क्या.
एसएल के लिए ओनली मूव बताओ या रिजाइन। एसएल के लिए ओनली मूव रिजाइन ही है रे, देयर इज नॉट मच यू कैन डू नाउ। H4 भाई साहब, लाइट स्क्वायर्स तो भाई गए। नॉर्मल इंसान के लिए कितना इक्वल लग रहा है मैच। मुझे एमवीएल पे भरोसा है, वो अगर कर भी देना कुछ तब भी हार रही है इंडिया भाई। इंडिया के लिए ड्रॉ भी कहां से आ रहा है? फोर्थ बोर्ड पे, ओके फोर्थ बोर्ड मे बी लाइक, बाय द वे मे बी एक सेकेंड, आफ्टर नाइट डी क्वीन G6 बिशप H4 वाज अ मिस्टेक और नाइट D4 Sasikaran is maybe even slightly better now chat, like practically bishop G3 bishop G4, okay, he's not better but it's like matlab he's no longer in risk, he's no longer under risk. I think he's fine now, his pieces are developed, the rook is coming into the game, so I don't think he's risking anything. What's happening in Nihal? Oh, Nihal game dead draw bhai, Nihal's game is the draw. I think we saw it till this position jahan pe isne he played queen c5, rook c8 played, bishop e3, queen c6 takes, bishop d4 takes, h6 now. This is a dead draw, this will be a draw, so Nihal's game will get half a point. Sasikaran, we might just, who knows chat, there is a genuine possibility that Sasikaran can win this. There is a possibility. So that means आधा पॉइंट यहां से आ सकता है, और कैन विन दिस, सॉरी कैन, तो यहां से एक पॉइंट आने के हल्के फुल्के 2% चांसेस हैं, एंड निहाल से आधा आ रहा है, तो वो तो ड्रॉ हो ही गया, इट्स ऑलरेडी ड्रॉ। रुक एंड गेम 3 वर्सेस 2 इज वेरी इजी ड्रॉ, सो दैट मीन्स अगर विदित एंड एसएल में से कोई एक ड्रॉ कर ले तो मे भी कुछ चमत्कार होने के चांसेस हैं, बट क्या ड्रॉ कोई कर पाएगा? आई जस्ट डोंट सी इट हैपनिंग चैट, ड्रॉ करना इंपॉसिबल ही लग रहा है यार। निहाल खून कब खोलेगा पता नहीं यार। I don't understand why these GMs are so overconfident. Just look like the engine's already pathetic. Which GMs are overconfident? I don't think they're overconfident, yaar. We need someone with beads to get a win, I guess. Even beads won't work. The beads don't lie. The position is so bad. VD and SL में से एक बंदे का ओपोनेंट ब्लंडर कर दे भाई, प्लीज प्लीज। वन ब्लंडर इज ऑल वी नीड। One blunder is all we need, and maybe SL becomes the hero on board 4. SL की तो बात मत करो यार, क्या करूं यार, बात तो करनी पड़ती है ना भाई, आफ्टर ऑल क्या ही कर सकता है इंसान। ये क्या हो रहा है? धुलाई हो रही है भाई, धुलाई, धोबी पछाड़। अर्जुन डिस्ट्रॉइंग 5 4.5 on 5. I know Arjun is crushing. Little of the white bar with MVN and Vidit. I know. Little of the white bar. जोक नहीं समझे भाई तुम, अच्छा जोक था क्या? Would you blunder in such a... I probably might, yeah, but I don't know if MVL would. Unlikely. I think the only hope VD has to exchange all the pawns. सब कुछ pawn exchange कर दो, and then ये अकेला pawn बच जाएगा तो draw हो जाएगी most likely. But फिलहाल के लिए exchange करना मुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है यार। Going to the game of Nihal Sareen. Okay, Nihal का तो draw होने वाला है. This should be an easy draw at Nihal's level. Going to... ये फेसिने को बोलो कुछ गलती करे यार भाई, कार्लसन को बुलाओ, एक दो गालियां बोलेगा फेसिने को तो बेचारा नर्वस हो जाएगा, गलती करेगा भाई। ऐसे की पोजीशन देखे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है भाई, क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं भाई, पैनिक होना चाहिए यार, पैनिक। कैन E4 be played in VD's game? Yeah, but the thing is, once right now the only weakness black has, the slight weakness is this pawn. Once you play E4, you're basically exchanging the weakness for a solid pawn. I would say instead of exchanging it, which would give you an isolated pawn which cannot be defined by any other pawn, हमारा structure अच्छा है, just keep it this way and ask black कि तुम क्या करोगे, because black का plan simple नहीं है. What does he do to win this? I think, and if you want to exchange pawns, try to keep one pawn and not kind of separate the pawns like this. Yeah, it's not realistic to expect a blunder, but that's all we can do. और कुछ है ही नहीं भाई। जब देखो, जब तुम समुंदर में हो, ठीक है, अब पानी यहां तक आ चुका है, सांस नहीं आ रही अब तुम सिर्फ प्रे ही कर सकते हो भाई, देयर इज नॉट मच यू कैन डू। उसके बाद टाइम देखो, टाइम देख रहा हूं भाई, टाइम भी देख रहा हूं। निहाल सरीन का गेम ड्रॉ हो जाएगा, आई थिंक ये तो बहुत इजी ड्रॉ है यार, ये तो मैं भी ड्रॉ कर लूंगा। एसएल गेम एनी होप? नहीं भाई, नाइट G4 इज इनकमिंग भाई। एसएल की ऐसी धुलाई हुई है इस गेम में, बेचारे का टूर्नामेंट ही खराब कर दिया यार सारा।
First round India won, RM. India won the first round, but second round it's over, chat. SL loses because Queen E2, there's Rook E8 and D4. So SL has to resign now. This is over. Queen F3, there's Knight H2 check, forking the king and queen. Queen D2, but anyways Rook E8, and it's lost, chat. It's lost. SL is losing. SL is losing by 4, so that is gone. Is Sasikiran having any chances? Doesn't feel like it actually. Yeah, man, this is gone. This is gone. We'll probably lose by 3-1. And I think जो tiebreaker होगा, blitz tiebreak, that will decide who will go to the semi-finals now. This is gone. 10 रुपए की bet कौन पहले resign करेगा? VD. I think SL पहले resign करेगा भाई. I think it's pretty obvious. लगा ली भाई 10 रुपए की bet, done भाई. Welcome to Who's Then First. A complete BDSM and SL resign. We want Armageddon. Armageddon ही है, kind of. It's not Armageddon exactly. Blitz है, but yeah, it's 3+2. How Nihal draws the game? Basically, I think Nihal has already shown it. So after pawn takes, yeah, this is the position. King F3 takes King G6. You just keep the pawn king here. Whenever white pushes the pawn, you trade one pawn, and then you basically keep the king here in front of the pawn, and you keep the king rooks up, preventing any checks. It's a simple Philidor draw if you want. There is no way white can win this. बस ध्यान रखना mate ना हो जाओ. Yeah, just keep the king here, the rook here, cut off the white king. No, don't allow it to move forward. At some point, white will have to play G5. We will exchange the pawns, and yeah, there's no way he can win this. So that means this should be a draw. I think Nihal will show us exactly. And फिलहाल के लिए bishop D4 played, but knight H2 is winning, C5 is winning, Queen F5 is winning. I'm sure everything is winning. भाई अनीश ने 50k खो दिए रूक एंड गेम में संभल कर. रहने कैसे दे भाई, देश को सपोर्ट तो करना है. अरे ये तो ड्रॉ हो गया रे. Sasikiran will draw, chat. Very similar to Nihal's position. I would say he's probably tiny bit better, but exactly equal, man. They won 3-1. Margin does not matter. Margin jitne se bhi jeeto. If both teams in one match, it will go to tiebreak. He can just take on D4 now. Queen takes D4 and then he plays C4, doesn't matter. Bishop E4 next, and this should be a comfortable draw for Sasikiran. But the issue is we will have 2 draws and 2 losses, and India will lose with the same margin they've won, 3-1. MVL mistake done, kuch bhi. After the move knight to b6, e4 played. Now it's a good move, I think, because you don't get an isolated pawn. D takes, knight takes, bishop e7. Yeah, man, it's just lost. SMA game mein knight odd. Better losing. Yeah, we don't lose 4-0, but at the end it's like, yeah, we do lose. It doesn't matter. So F4 played by VD. VD is trying to desperately exchange all these pawns. That's the only hope he has. Bhai sir, tweet karo, margin lives matter. VD played my move. Nice, nice, Nandini Rishi, nice. Going to the game of SL again. Is there any hope? Yeah, there is full hope that SL resigns in the next 2 moves. Yeah, Arjun is winning, man. Arjun is destroying Caruana, literally destroying him. It's, I think, he's 3 points or 2 points ahead at least. चैनल पर बाद में देखेंगे भाई, पहले अपना मैच देख ले. नाइट D5 प्लेड बाय MVL. अभी भी बेस्ट मूव खेल रहे हैं यार. ब्लैक को कुछ नहीं करना है भाई, पीछे चेंज करने हैं. नमन सचदेवा जी कह रहे हैं SL विनिंग. नमन सचदेवा जी, आपके लिए कुछ पर्सनल बात करनी है मैंने. अगर आप मुझे बोलते ना कि आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि सन कल ईस्ट वेस्ट में राइज होने वाला है, there's a more likely chance I would believe you than SL winning this game. It's just so lost. Like हमारे पीस वहां पे literally Netflix and chill भी नहीं देख पा रहे बेचारे. नहीं, I don't live alone, भव्या. आपको निक्स इंडिया का इंटरव्यू देखा. निक्स इंडिया क्या है भाई? If VD can draw from here, I promise it'll do something good. What can you suggest? If VD can draw from here, but how can he draw from here? That's the question. No, I just don't see it, because knight b4 is coming and he will exchange more pieces. All black has to exchange pieces, push the a pawn. Once he pushes the a pawn, it's over. Tiebreak is basically blitz, 3+2 blitz.
इफ वी ड्रॉस दिस साइड टॉक्सन स्ट्रीम, भाई तुम करो ना भाई, भाई हमारे ऊपर का है। अरे यार पूरा पूरा मूड ही खराब हो गया। अरे यार किस का चैट में मूड खराब है भाई? से यस, इज बीड्स अलाउड? या मैन, इफ यू डोंट गेट कॉट, यस। मुझे थोड़ी सब्स मिलेंगे भाई, त्वक से सब्स नहीं चाहिए भाई। नो नो नो, यस 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 यस, वेस्ट फैबियानो 1, ओपीएफ साइट का नाम है निक्स इंडियन, रियली? वेरी यस वेरी यस। स्कोर क्या है? इंडिया हार रही है। अरे इंडिया इज कंप्लीटली लॉस प्रणाली। इंडिया विल लूज दिस वन एंड टाई ब्रेक होगा भाई। भाई ठीक है, वीडी ड्रॉस एंड शेयर जूम लिंक, वी विल टॉक फुल समय रहने वाला डेजावू हो जाएगा। वीडी विल नॉट ड्रॉ दिस मनस्वी, आई कैन गारंटी। And Manasvi, by the way, I assume you're a guy, I hope. Spain crushing Azerbaijan. Wow. भाई वो डैश स्टार है निक्स। Oh, okay. By the way, Nihal has drawn chat. Nihal has drawn as mentioned. So that means आधा पॉइंट आ गया। 4-0 नहीं हारेंगे भाई, 4-0 नहीं हारे, कम से कम इज्जत बच गई। शशि जी क्या कर रहे हैं भाई? शशि जी ड्रॉ कर लीजिए, छोड़ो यार, वैसे भी कोई चांस तो है नहीं। The chances of India winning are like Costa Rica winning 5-0 against Spain. Dude, you never know. If you want to see, could you type anything? मेरे पापा जी ने इंस्टीट्यूशन नाम रख दिया है, मैं लौंडा ही हूँ। बढ़िया है भाई। Sasi has to win, VD has to draw. Not happening, buddy. Not happening. Not happening at all. The best move now is suck. अभी भी खेल रहा है रे एसएल। That's crazy. SL में बड़ी हिम्मत है। Now Queen G4 and you resign. D4 you resign. Queen G4 you resign. Nothing you resign. Why MV is better? Because he's a pawn up. Even this is resign. Rookie through incoming nest. It's like Japan beating Germany. Not really. I think France on paper is actually the stronger team. Very slightly. So I wouldn't say कि it's technically an upset. But हमारे लिए तो upset है ना यार। हमारी टीम जीती नहीं तो प्रॉब्लम रहेगा। ये रैपिड है भाई, बट अगला वाला ब्लिट्स होगा चैट। दिस वाज 45 + 10, नेक्स्ट विल बी 3 + 2 डायरेक्टली ब्लिट्स। सो वंस दिस फिनिशेस, लेट मी चेक द टाइम, लाइक व्हेन द ब्लिट्स विल हैपन। या गिव मी अ सेकंड चैट, लेट मी क्विकली चेक व्हाट टाइम इज द ब्लिट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। दैट विल बी वेरी क्रूशियल। नाउ वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप का प्लेइंग शेड्यूल देखते हैं। इट इज What? Really? नहीं, इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते। Dude, टाई ब्रेक रात को 1 बजे है। What the hell? टाई ब्रेक रात को 1 बजे है भाई। 1 बजे कौन टाई ब्रेक्स रखता है रे? ये क्या पागलपन है? अब क्या तीसरी स्ट्रीम शेड्यूल करूंगा मैं? अरे भाई ये क्या लोल कर दिया। कौन 1 बजे देखेगा टाई ब्रेक्स? भाई बताओ कौन तैयार है 1 बजे टाई ब्रेक देखने? ब्लिट्स ही है वो, 15 मिनट स्ट्रीम चलेगी। इट विल ओनली लास्ट 15 मिनट्स। बट कौन देखने को तैयार है 1 बजे? बताओ भाई। यस मी ठीक है, जितने लोग तैयार है भाई 1 बजे टाई ब्रेक्स होंगे। पहले बाय द वे चैट, Sasi Kiran has drawn, so we gain 1 point, and SL has lost. So that means the only way we win this directly is when VD wins. So draw is not enough now. Bishop B4, King C1, A5, Knight G5, F6. VD भाई उसका पीस उठा लो यार बोर्ड से. That's the only hope now. कल स्ट्रीम करूंगा मैं, of course I'll stream because blitz है यार. blitz तो फन होता है रे, मजा आएगा. I will definitely stream. I'm just saying कि देख रहा हूं कितने लोग होंगे. स्ट्रीम बंद करके आना. हाँ, I will close the stream because I think स्ट्रीम बंद करके आएंगे तो बेटर लक होगी. At least that's my perspective. Don't end the stream. भाई chat, which one do you think is better for luck? हमने पहली स्ट्रीम करी, India won. We ended the stream. Then we started the stream. India lost. Now, do we end the stream or do we continue? 97 played by MVL. पोल करते हैं भाई, पोल करते हैं. Let's do a poll. End or continue?
एंड कंटिन्यू। अर्जुन का मैच है तो आई फॉरगॉट। अरे अर्जुन का मैच है, ठीक है, एंड करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन का मैच देखेंगे ना, अर्जुन का मैच देख सकते हैं। अरे अर्जुन का मैच देख सकते हैं यार, वी कैन हैव अ लुक, दैट इज पॉसिबल। या वैसे बेकार से बाद में आएंगे यार, आई थिंक थक भी जाएंगे यार, रेस्ट कर लेंगे भाई थोड़ा सा। लेट्स सी, लेट मी डू अ पोल स्टिल, रुको। एंड चैनल, क्योंकि उसमें भी बुलेट देखेंगे यार। आई रियली लव द एसएससी का बुलेट वाला पार्ट। स्ट्रीम फ्रॉम न्यू चैनल, लोल्स। बाय द वे अर्जुन इज स्टिल लीडिंग, दैट इज कूल। बाय द वे नाइट h4 g5 played by MVL, which is going to help Vidit to exchange one more pawn. Yeah, it's okay, but still it doesn't have any chance of winning. We want MJ, really? चलो भाई, MJ भाई आपके हाथ में आ चुका है, क्या आप अपसेट कर सकते हैं यहाँ पे? MJ भाई, लेट्स गो। कौन है चेस प्लेयर जिसने इस टूर्नामेंट में सबका दिल जीता, ओपोनेंट के पीस जीते? कौन है वो खतरनाक खिलाड़ी? चलो भाई। ओ ये क्या हो गया भाई, ये क्या है? मैं बड़ा कैसे हो गया? माँ, मैं बड़ा हो रहा हूं माँ। बढ़िया भाई। डिलीट चैनल, स्टार्ट अ न्यू वन। अब तो पक्का हारेगा ब्लिट्स। नहीं भाई, ब्लिट्स सबका होगा ब्लिट्स भाई, सबका होगा ब्लिट्स भाई, सबका बदला लेगा है तेरा फैजल। Okay, knight g6 played by VD. He's exchanging pieces. That means कि भाई closer and closer to the end of the game. Still some hope. Maybe VD does some upset. Who the hell knows? MVL chess खेलना भूल जाए. Maybe there is some hope there. Chat. Who the hell knows, man? Chess खेलना भूल सकता है MVL. There is possibility. अगर अर्जुन हारे तो तुरंत स्ट्रीम बंद कर देना। We do believe in miracle. VD will win. Let's see. Uzbekistan qualified. Really? Chat, let me check. Uzbekistan has qualified for the semi-finals. Azerbaijan की टीम थोड़ी स्ट्रगल कर रही है. They will also go to tie breaks. And China is most likely also going. So that means India is the all India and Azerbaijan का tie break होगा बस. Did it sound like beat it? No, bhai. It's Vidit. We will win blitz. Let's hope so, bhai. अच्छा वो पढ़ लिया वरना सुपर चैट करने वाला था। क्या है भाई? Are we out? No. It's blitz. The blitz will start at 1 a.m. chat, 8:30 p.m. according to that. So 1 बजे blitz होगा. So I'm thinking of starting the stream at 12:30. जब बुलेट सेक्शन होगा इसका क्या बोलते हैं, कारुआना अगेंस्ट अर्जुन का, इनका बुलेट देखेंगे एंड देन उनका भी वो देखेंगे। लेट्स सी ब्लिट्स कौन खेलेगा भाई? ब्लिट्स चारों खेलेंगे, चारों प्लेयर खेलेंगे। फुटबॉल इज क्रेजी, अर्जेंटीना नाउ जर्मनी, दिस वर्ल्ड कप इज गोना बी फुल ऑफ सेट्स 2-2। इज गेम टू शो बिशप पे एडवांटेज। बिशप पे एडवांटेज की बात ही नहीं है यार, एक्स्ट्रा पॉन भी है ना। इफ दिस पॉन वाज नॉट हियर प्रोबब्ली इट वुड बी इक्वल, बट विद द एक्स्ट्रा पॉन इट्स लॉस्ट। 1 बजे ब्लिट्स है किरण भाई, बट दैट विल बी द नॉकआउट ब्लिट्स, इट विल बी नॉकआउट ब्लिट्स। बट कंटिन्यू कैसे करे यार? कंटिन्यू करना मुश्किल है रे। ब्लिट्स में इसका, क्योंकि कल मेरा इंटरव्यू यार, आई कांट स्पीक फॉर 7 आवर्स, मेरा गला बैठ गया तो कल मेरी इंटरव्यू में लग जाएगी, तो आई विल हैव टू लाइक एंड द स्ट्रीम आई थिंक। 8 PM is 12 AM I think. No, I think this tournament is happening in Israel. Let me confirm this chat. Israel time. अबे Israel time. अरे बैटमैन जी थैंक्स अ लॉट फॉर द सुपर चैट भाई। कॉफी के लिए आई विल ऑर्डर इट भाई अभी के अभी। रुको, जेरूसलेम थैंक्स अ लॉट बड़ी, मींस अ लॉट फॉर द सपोर्ट, it really means a lot buddy. Oh, it's not 1, ruko, it's 7:43 PM right now. So time is at 8:30. Oh, it's at 12. It's not at 1. 12 AM है chat, ठीक है बढ़िया। 12 को है ना, फिर तो awesome है, फिर तो बढ़िया है भाई, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। फिर तो we'll end the stream, start half an hour later and it's all fine। बढ़िया 12 AM को है chat, 12 AM को है। It's something important but I just need some rest, तो मेरे को I'll end the stream once this game finishes. I'll start at 12 again। बढ़िया भाई। किसके लिए इंटरव्यू भाई है यार? स्ट्रीम पे कुल्फी खाओ। नहीं भाई, कुल्फी में गलत हो जाएगा। कंटिन्यू क्या? आई कैन कंटिन्यू इट। लेट्स सी। डोंट 10 स्ट्रीम, ठीक है भाई। सुपर चैट रिटर्न करो फिर।
कर लूंगा कंटिन्यू भाई. इफ टिकू का ही कांट फॉर्म एन इंटरव्यू, ये क्या है रे? गले की बात कर रहे हो होपफुली. वीडी स्टिल प्लेइंग, या इंटरेस्टिंग. I mean, maybe MVL just forgets how the bishop move, yeah? Maybe he gets two illegal moves. Who the hell knows? Maybe, yeah? Who knows? MVL knows knight bishop mate. He has two bishops by. He doesn't need to know knight bishop mate. Discord मेरे को 2 वोट मिलने चाहिए. I will do the interview. नहीं यार, I have to do it myself. It is gone, chat. I think chat so far Sasikiran has drawn, SL has lost, Nehal has drawn and VD is losing. So basically जो लोग हमारे लिए मैच जीतते थे वही दोनों हार गए and Sasi and Nehal drew as usual. So yeah, I think this is very clear कि board 1 and 4 are the deciding boards in both rounds. That's very interesting, right? पिछले मैच में भी board 1 and 4 were the results and board 1 and 3, sorry, and इसमें भी board 1 and 3 were the results. So board 1 and 3 are the critical ones. Yo Shiaziz, कैसे हो यार? अगर नाइट एक पॉन ले और बाद में लाइट्स का बिशप एक्सचेंज करे, then it's wrong pawn. Yeah, but draw is not enough. That's the issue, bhai. Even if something happens, draw is not enough. Thanks a lot, Aloy, for the super chat. Bhai, CHF, bhai, are you from Switzerland? कहाँ से हो यार Switzerland में? बताओ यार कहाँ से हो यार? Would love to know. Thanks a lot for the support, buddy. Means a lot. Really helps out. Is a knight sack possible here for the pawn? It is, but the issue is this pawn still remains. If this pawn was not here, I think you could possibly sack and draw. But a draw is also not enough. Fabi lost on time. Awesome. Basil, अरे nice. मैंने एक स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करा है भाई. हिंदी में बोल रहा हूँ, कहीं जर्मनी वाले ना सुन ले. उधर भी अप्लाई करा है मैंने. एक में अप्लाई किया था. अर्जुन फ्लैग फैबी इन लास्ट 5+2. ऑसम. एक मिखाइल ताल टाइप गेम दिखाई जाए मैं धन्य हो जाऊंगा भाई. वो ब्लिट्स में ही दिखेगी अब ब्लिट्स में ही पॉसिबल है भाई. ब्लिट्स में ही पॉसिबल है. CHF डॉलर से ऊपर है क्या? I think it's a bit lower. I think CHF is like a bit lower than euro, I think. Knight have to play it now. 3+2 होगा blitz by 3+2 होगा. Can't we sacrifice knight for a pawn? We can भाई, but it will still be lost because एक pawn तो रहेगा ना. I do chase by. Almost, yes, almost. VD बेचारा खेले जा रहा है भाई, but it's not enough, chat. Arjun won the 5 and 6-3. Nice. CHF is higher than dollar. क्या बात कर रहे हो? Really? डॉलर इतना ऊपर जाने के बाद it is higher. Wow, I did not know this. Thanks for support भाई. I mean कितनी देर बाद होगा? 12 बजे ब्लिट्स है चैट. 12 बजे ब्लिट्स है. I will end the stream I think in 2 minutes and then we'll see. कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है भाई? MBA के लिए. दोनों बिशप उठाकर भाग जाओ. I think वही करना पड़ेगा भाई. ये एक बिशप को खा जाओ भाई. किसी ने वो याद है पहली हेरा फेरी देखी है जहां पे वो सुनील शेट्टी नाम है ना, he just eats the letter which अक्षय कुमार has given to तबू. वो खा जाता है सिर्फ. I think that's what he has to do now. वो बिशप खा जाना पड़ेगा भाई. कोई एविडेंस नहीं छोड़ने का कि बिशप जिंदा है. वही करना पड़ेगा भाई अब. Come on, buddy. The issue is 2 bishop mate is very easy. Exactly. Knight e4 just a fork. Yeah, but king b4 then, and I attack your bishop. कनाडा के लिए अप्लाई नहीं किया मैंने यार. कनाडा में एक्चुअली बहुत स्किल्ड लोगों को इट्स पॉसिबल टू एंटर. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ब्लंडर कर MVL माता रानी 5. माता रानी को भी घुसा दिया. यहाँ पे क्या ही ब्लंडर कर सकता है यार ये. इट्स लाइक क्या ही ब्लंडर कर सकता है कि वीर जीत जाए. पूरा का पूरा पीस देना पड़ेगा रे. नीमन का राजा किसी ने तोड़ दिया था. करने कॉलेज जा रहे हैं टिक्कू भाई? हाँ भाई यार, आई एम अप्लाइंग टू सम MBA कॉलेजेस फॉर नेक्स्ट ईयर सितंबर. लेट्स सी होता है कि नहीं. We are lost, yes, but if VD wins, we tie the match. But that's not happening, bhai. That's not happening, of course. But wait करें गेम खत्म होने का. I think black can just take now, and that will ensure, yeah, it's over, chat. Yeah, because VD only has a bishop, and that means कि even if black were to gift these 2 pawns for free, it would still be draw. GMAT नहीं, मैंने GR ही दिया था यार अगस्त में मजे में. मेरा स्कोर आया था यार
मतलब it came out to be 325 GRE which is equivalent to 700 GMAT. और मैंने literally 4 घंटे तैयारी करी थी भाई, so I assume that's good. By the way, VD has lost chat and that means India is gone, and that means we'll have to wait for the tie break now, and that means the blitz will happen at 12 पे होगा and 12 बजे blitz होगा. Now chat, डायरेक्ट होगा, जो ब्लिट्स में जीतेगा he goes to the semi-finals. I am going to schedule a stream for 12 now. I will end the stream, be back in around half an hour I think, and we'll do an update on what's happening in the Arjun game, and then let's see. Bye chat, see you in half an hour. आ जाना भाई 11:55 पे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. सब का सब ट्रस्ट नहीं भाई, ये स्ट्रीम जिंक्स हो चुकी है बिकॉज वी लॉस्ट. अगली स्ट्रीम की जरूरत है भाई. थैंक्स अ लॉट नंदियन श्री, and we'll see now what happens. See you in half an hour chat. Take care.